काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह जल जलालुहु व वालुहु ने हम सब को इस दुनिया में पैदा किया है, अपनी कुदरत से पैदा किया है। एक ज़माने तक हम यहाँ रहेंगे और इसके बाद में हम सब इस दुनिया से चले जाएंगे। Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dan hantarkan kita ke permukaan dunia dengan kudratnya sendiri. Beberapa lama kita tinggal di dunia dan suatu saat nanti kita pasti akan kembali kepada Dia, meninggalkan ini dunia. ये दुनिया का निज़ाम है, कुछ ऐसा अल्लाह ने बनाया है। लोग आते हैं, आने का सिलसिला भी जारी है, और जाते हैं, जाने का सिलसिला भी जारी है। Dan ini merupakan sudah nizam yang terjadi di permukaan dunia. Ada orang yang datang, lahir, ada yang pergi. Begitulah antara kelahiran dan kematian senantiasa menemani kehidupan ini manusia. हर आने वाला आता है एक रास्ते से, जाने वाले जाते हैं, इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं। अब मसला मेरे भाई और दोस्तों ये है कि इस दुनिया में जितने लोग आए और आकर इस दुनिया से चले गए, मौत आई, सब मर गए। मौत के माना क्या है? मौत के माना अमूमी तौर पर लोग ये समझते हैं कि साहब मर गया तो ख़त्म हो गया, मर गया तो उसका मसला ही ख़त्म हो गया, उसकी हाजतें ख़त्म हो गई, उसकी ज़रूरतें ख़त्म हो गई। ये आम तौर पर मौत के मसले को समझकर आदमी गाफिल हो जाता है। Dan setiap orang yang datang ke dunia pasti dia akan pergi. Datang dari jalan yang sama dengan cara yang sama. Kemudian satu saat kematian pun pasti akan menjemput dia. Kemudian itu yang namanya kematian. Apa itu kematian, Pak? Kematian bukan berarti akhir daripada kehidupan. Orang hari ini mengira apa itu kematian, dia meninggal dunia, sudah selesai perkara dia. Padahal belum. Setelah kematian nanti ada kehidupan yang lebih panjang lagi, yang sangat menentukan daripada kehidupan manusia di masa akan datang. Apakah selamanya bahagia atau selamanya akan menderita? यही मसला है जो इंसान को धोखे में रखता है और आखिरत को भूल जाता है, मौत को भूल जाता है। इस दुनिया की ज़िंदगी चंद रोज़ा है, और मौत क्या है दोस्तों? इंतकाल है। अरबी में कहते हैं इंतकाल। इंतकाल के माना एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। एक जगह से दूसरी जगह आदमी चला गया तो अब इसके माना ये नहीं कि उसकी ज़रूरतें ख़त्म हो गई। एक आदमी इंडोनेशिया में है, भूख उसको यहाँ भी लगती है, ये मक्का जाएगा तो वहाँ भी भूख लगेगी। प्यास यहाँ भी लगती है, ये मक्का मुंतकिल हो जाएगा तो प्यास वहाँ भी लगेगी। गर्मी यहाँ लगती है, ये मक्का मुंतकिल हो जाएगा तो वहाँ भी गर्मी लगेगी। ये जहाँ भी मुंतकिल होगा उसकी हाजतें उसके साथ होगी। ऐसे इंसान इस दुनिया में आया है। इस दुनिया से मौत के माना यह है कि इस दुनिया से ये दूसरी दुनिया में चला गया। अब वहाँ की जितनी हाजतें हैं वो सारी हाजतें उसके साथ लगी हुई। Jadi manusia sering tertipu. Dikira dia setelah selesai kehidupan di dunia yang namanya kematian, udah akhir daripada kehidupan manusia. Sehingga manusia lupa akan kehidupan di akhirat. Sehingga bahkan kematian pun dia lupakan. Dia tidak mau mengingat kematian dalam kehidupan dia. Padahal hadir Allah yang namanya al-maut, kematian adalah al-intiqal, berpindah saja. Bahasa Arabnya intiqal, berpindah satu tempat ke tempat yang lain. Maka hadir Allah di satu tempat, sebagaimana kita sekarang berpindah umpamanya tinggal di Indonesia, suatu saat pindah ke Malaysia atau pindah nanti ke Mekah. Maka sekedar perpindahan saja. Hajat kita miliki di satu tempat, nanti saat kita pindah ke tempat yang lain juga kita memiliki hajat, keperluan juga. Hadir Allah, umpamanya orang pergi haji ke Mekah, di Indonesia dia punya hajat untuk makan, ada lapar, maka dia pun punya hajat untuk makan. Nanti saat dia pindah ke Mekah atau pergi ke Mekah, di sana juga dia akan lapar juga, dan dia punya hajat untuk makan juga. Di tanah air dia haus, maka dia berhajat untuk minum. Nanti sampai di Mekah, haus yang sama juga akan datang pada dia, dan dia pun juga berhajat untuk minum. Di Indonesia dia barangkali kepanasan, apabila daerah khatulistiwa di sini panas dia. Nah, maka dia berhajat untuk mendinginkan badan dia dari kipas angin ke AC kan. Sama sampai di Mekah, nanti panas juga akan datang pada dia. Dia juga punya hajat untuk mendinginkan badan dia tadi. Hadir Allah Subhanahu wa taala. Jadi perpindahan. Jadi bukan berarti menghilangkan hajat-hajat kita, keperluan kita. Di tempat ini kita ada keperluan yang harus ditunaikan. Nanti waktu kita pindah di sana juga ada keperluan yang harus kita tunaikan.
اس دنیا میں انسان ہے تو اس کی حاجتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں. یہ دنیا چھوٹی ہے, یہ دنیا بہت چھوٹی ہے, اور اس دنیا میں انسان کی حاجتیں اور ضرورتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں. حاجتیں ہیں اس کے پاس لیکن بہت چھوٹی. اس کا جسم, اس کی باڈی یہاں بہت چھوٹی. یہاں سے دوسری جگہ جائے گا تو ہر چیز بڑھ جائے گی. یہاں کی حاجتیں کیا ہے؟ بھوک لگی, آپ نے ایک پلیٹ چاول کھا لیا, بھوک دور ہو گئی. یہاں کی بھوک چھوٹی. یہاں کی پیاس اتنی کہ آپ نے ایک گلاس پانی پی لیا, پیاس دور ہو گئی. یہاں کی گرمی کیسی کہ آپ پنکھے کے نیچے آ کر بیٹھ گئے, گرمی دور ہو گئی. اے سی کے اندر میں آ کے بیٹھ گئے, گرمی دور ہو گئی. یہاں کی سردی چھوٹی. یہاں کی سردی میں آپ نے ایک کمبل اوڑھ لیا, سردی آپ کی دور ہو گئی. ہیٹر کے پاس بیٹھ گئے, دور ہو گئی. یہاں اسی دنیا میں انسان کی حاجتیں بہت تھوڑی تھوڑی ہے اور چھوٹی چھوٹی ہے. موت کے بعد انسان کی حاجتیں جب دوسرے جہاں میں منتقل ہوگا, وہ جہاں بہت بڑا ہے. Lo katakan dunia ini kecil, Pak. Begitu pula keperluan di dunia juga kecil. Keperluan kita di dunia adalah kecil. Bumi ini sendiri sangat kecil sekali. Dan juga manusia-manusia yang tinggal di dunia ini juga kecil. Keperluan juga kecil sekali. Umpamanya kita di sini keperluan kita akan makan, lapar, maka cukup satu piring atau dua piring maksimal sudah hilang rasa lapar kita tadi. Begitu pula haus, dikasih satu gelas hilang dahaga dia. Kecil keperluannya tadi. Dia pun bawanya kepanasan, cukup satu kipas angin atau satu AC saja dipasang satu ruangan, sudah hilang panasnya tersebut. Begitulah kedinginan dia, satu selimut yang cukup tebal sudah cukup, ataupun pasang heater pemanas, hilang dinginnya tadi. Jadi keperluan-keperluan di dunia ini sangat kecil, apalagi tubuhnya manusia juga sangat kecil. Maka keperluannya adalah sangat kecil di permukaan dunia ini, kecil dan juga sedikit. Sementara nanti kebutuhan kita di akhirat jauh lebih besar. اس دنیا کی راحتیں بہت چھوٹی, اس دنیا کی تکلیفیں بہت چھوٹی, اس دنیا کا ٹینشن بہت چھوٹا. یہ دنیا جو ہے اس کے مسائل بہت چھوٹے چھوٹے ہیں. یہاں کی راحت اتنی چھوٹی کہ ابھی راحت ملی اور ذرا سا کوئی مسئلہ آ گیا تو صاحب یہ راحت تکلیف میں بدل گئی. ابھی تکلیف میں ہے اور اچانک خبر آ گئی کہ صاحب وہ تو مقدمے سے بری ہو گئے, صاحب راحت آ گئی. یہاں کی ساری چیزیں جتنی ہیں یہ بہت چھوٹی چھوٹی ہیں. یہ دنیا چھوٹی ہے, اس لیے یہاں کی ساری چیزیں چھوٹی. انسان جب اس دنیا سے جائے گا تو جس عالم کی طرف جائے گا, جس دنیا کی طرف جائے گا, وہ بہت بڑی دنیا ہے, وہ بہت بڑی چیز ہے. وہاں تو یہ سورج جو زمین سے اتنا بڑا ہے, یہ سورج بھی کسی پاسے میں رہ جائے گا. یہ وہ آخرت جو ہے اتنی بڑی ہے, اتنی بڑی ہے, اتنی بڑی ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے. اللہ پاک ایک جنتی کو, ادنا درجے کے جنتی کو جنت جو عطا فرمائیں گے وہ اس دنیا کے مقابلے میں 10 گنا بڑی ہوگی. اس پوری دنیا کے مقابلے میں 10 گنا بڑی ہوگی. اب ایک جنتی کو 10 گنا بڑی دے رہے ہیں, لاکھوں کروڑوں اللہ کرے جنتی ہوں گے اور ان سب کو دے رہا ہے اللہ پاک, تو وہ جہاں کتنا بڑا ہوگا. وہ آخرت بہت بڑی ہے. اس لیے میرے دوستو وہاں کی راحت بھی بہت بڑی ہے اور وہاں کی مصیبتیں بھی بہت بڑی ہیں. Beliau katakan kesenangan, kegembiraan, kerehatan di dunia juga sangat kecil kan. Begitu pula penderitaan, kesusahan juga kecil di dunia ini. Sehat sebentar, sakit juga sebentar saja. Beliau katakan orang dalam keadaan senang, gembira dia, datang berita bahwasanya ada kecelakaan, anaknya atau istrinya atau suaminya, langsung dia hilang kegembiraan dia, berubah menjadi kesedihan. Sedih dia karena diputuskan, dia akan dihukum mati. Tahu-tahunya ada berita, ternyata dia bebas dari hukuman tersebut. Tadi menderita kayaknya mau mati, sekarang tertawa dia. Jadi cepat sekali perubahan di permukaan dunia ini. Selain kecil dan berubah dengan cepat sekali. Sementara nanti hadir Allah di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala kesenangannya besar sekali, gembiranya besar dan dia akan berakhir semakin membesar terus. Beliau katakan mudah-mudahan nanti dimasukkan ke surga insyaallah. Satu orang surga saja berapa dikasih kesenangan di Allah Subhanahu Wa Taala. Satu orang surga yang paling rendah surganya, dia akan mendapatkan hadirin nanti surganya
akhirat 10 kali daripada kerajaan dunia ini. Itu satu orang surga saja 10 kali daripada dunia ini. Bagaimana dengan jutaan, mungkin miliaran penduduk surga nanti? Berapa luasnya itu surga? Sangat besar. Kerehatannya pun, kesenangannya pun sangat besar dibanding dengan kesenangan di dunia ini. ऐसे ही जहन्नमी जो अल्लाह मियाँ ने जहन्नम बनाई है, मैंने कहा कि जन्नत इतनी बड़ी बड़ी है, इतनी बड़ी चीज़ है, ऐसे अल्लाह मियाँ ने जहन्नम जो बनाई है, वो जहन्नम आप इससे अंदाज लगाओ कितनी बड़ी होगी, कितनी बड़ी होगी कि एक जहन्नमी को जब जहन्नम में दाखिल किया जाएगा तो ये बॉडी थोड़ी होगी, ये 6 फीट की बॉडी नहीं है वहाँ तो इतना बड़ी बॉडी उसका, इतना बड़ा जिस्म बना दिया जाएगा कि कांधे से लेकर के कान तक का फासला 500 साल की मसाफत का होगा। और जहन्नमी की एक दाढ़, ये जो दाढ़ होती है मुंह में, जहन्नमी की एक दाढ़ ओहद पहाड़ के बराबर होगी, तो वो मुंह कितना बड़ा होगा, फिर वो चेहरा जिस पर ये कितना बड़ा होगा, उसका हाथ कितना बड़ा होगा, उसका पाँव कितना बड़ा होगा, और वो जहन्नमी की कितनी बड़ी साइज होगी। अब इस जहन्नमी इतने बड़ी साइज वाले आदमी की भूख के दूर करने के लिए कितना खाना चाहिए, प्यास के दूर करने के लिए कितना पानी चाहिए, आग से बचने के लिए कितना चाहिए, सर्दी से बचने के लिए कितना चाहिए आदमी, और फिर अजाब है वो अल्लाह का अजाब है, उस अजाब से बचने के लिए कि उसको क्या क्या तैयारी करनी होगी। ये अल्लाह ने इस दुनिया को, हम सोचते हैं दुनिया से आखिरत बहुत बड़ी है, और इससे आपकी समझ में आ जाएगा ये 2 मिसालें कि एक आदमी को 10 गुना दुनिया से बड़ी जन्नत, और एक आदमी के ये ढांचा बना करके जा रहा है कि उसका एक दाढ़ ओहद पहाड़ के बराबर है। वो रोएगा तो रोते 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 उससे इतने आंसू बहेंगे कि उस पर से कश्तियाँ चलेगी। ये मेरे दोस्तों बहुत बड़ा मसला है। दुनिया में है, दुनिया की हाजतें छोटी है, लेकिन मौत के बाद मौत पर आदमी ख़त्म नहीं होगा, मौत पर आदमी दूसरे जहां में मुंतकिल होगा, और वो जहां ऐसा है कि उसकी तैयारी बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ है। Begitulah Jahannam. Betapa besarnya itu neraka Jahannam. Orang yang akan tinggal di neraka itu saja dikatakan oleh Nabi SAW berapa besar badannya. Sekarang tubuh manusia di dunia sangat kecil sekali, pendek, paling 2 meter, lebarnya cuma setengah meter. Tapi di neraka jarak antara bahu dengan daun telinganya saja perjalanan 500 tahun kata Nabi SAW. 1 gerahamnya orang neraka nih, 1 geraham dia itu sebesar gunung Uhud. Ya Allah. Padahal gunung Uhud lebih daripada 10 km lebarnya tersebut. Itu baru 1 gerahamnya. Jadi kita bisa bayangkan berapa besar mulutnya tersebut. 1 gigi saja sudah sebesar gunung Uhud. Bagaimana mulut dia? Bagaimana mukanya besarnya? Bagaimana pula badannya? Dan hadir orang yang punya tubuh sebegitu besar. Tentu keperluan makan dia berapa? Bukan cuma 1 piring, nggak cukup. Dan kalau dia haus, keperluan minum dia berapa? Kalau sekalinya dia kepanasan, untuk mendinginkan dia berapa perlu? Tadi di dunia cuma 1 kipas angin, di sana nggak bisa 1 kipas angin. Begitu pula kalau dia kedinginan sekali, di api neraka namanya tempat yang sangat dingin sekali. Bagaimana untuk menghentikan itu dingin? Banyak sekali keperluan dia. Jadi hadir Allah. Kalau tadi di sorga 1 orang sorga saja 10 kali daripada dunia ini, dan orang neraka perbandingannya lebih hebat lagi. Sementara jumlah yang akan masuk neraka lebih besar daripada yang masuk surga. Kita bisa bayangkan bagaimana itu neraka. Yang jelas hadirin Allah, dunia ini sangat kecil, keperluan dia juga sangat kecil. Nanti kalau sudah berpindah kepada kematian, bukan akhir daripada kehidupan, hanya perpindahan saja, maka hajat-hajat kita sangat banyak. Maka untuk menunaikan hajat yang sangat besar di akhirat, diperlukan juga kerja yang sangat besar di permukaan dunia ini. Allah. अब इसके लिए मेरे भाइयों, आखिरत बहुत बड़ी चीज़ है। आखिरत, अब आदमी समझता क्या है इस दुनिया में कि साहब आखिरत दूर है। समझता क्या है साहब, शाम को खाना खाना है, ये करीब है, शाम बच्चे की शादी करानी है, ये करीब है। नहीं मेरे दोस्तों, आखिरत बहुत करीब है। आखिरत के लिए कोई वक्त नहीं है, किसी की मौत का कोई टाइम नहीं है।
تم کب مرو گے کچھ بھی نہیں. ایک آدمی ابھی مرا, آخرت آ گئی سب. اب مرنے کے لیے نہ بیماری شرط, مرنے کے لیے نہ ایکسیڈنٹ شرط, مرنے کے لیے کوئی چیز شرط نہیں. اللہ جب چاہے جس وقت میں چاہے, کوئی بھی ظاہری بہانہ ہو سکتا ہے, اللہ اس کو موت دے دیتے. جہاں مرا, مرتے ہی یہ دنیا تو اس کے ہاتھ سے نکل گئی, آخرت کی بہت بڑی دنیا اس کی شروع ہو گئی. مرا, بیوی الگ, بچے الگ, باپ الگ, ماں الگ, گھر الگ, ساری چیزیں پیچھے سے چھوڑ دی, خالی ہاتھ تنے تنہا اپنی قبر میں گیا. اب یہ قبر میں, یہ اس کی قبر جو ہے, یہاں سے آخرت شروع ہو گئی. اگر زندگی دنیا کی بنی ہے تو قبر جو ہے مزے سے, پھر اگلا سارا مرحلہ آسان. اور اگر اس دنیا میں اس نے وہ اگلے گھر کی تیاری نہیں کی ہے تو قبر میں جاتے ہی مصیبتوں کا شکار ہو گیا, پریشانی کا شکار ہو گیا, عذاب کا شکار ہو گیا. اور وہ عذاب میں نے جیسے کہا, دنیا کا عذاب نہیں ہے, دنیا کے بچھوؤں کا زہر نہیں ہے. وہ زہر دنیا کے بچھوؤں کا نہیں ہے جس کی اتنی سائز ہوتی ہے, ایک چپل مارنے سے ختم ہو جاتا ہے. وہ تو وہاں کے سانپ اور وہاں کے بچھو اونٹ اور کھچروں کے برابر ہے. وہ ایک مرتبہ وہ سانپ اتنا زہریلا ہے, ایک مرتبہ زمین پر پھوکار مار دے تو قیامت تک زمین پر گھاس نہیں ہوگی. وہ آخرت قبر سے ہی شروع ہو گئی. اب یہاں رشتہ دار لوگ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, بھائی صاحب چلے گئے, یہ صدر تھے, یہ کمیٹی والے تھے, آ رہے ہیں, لوگ مل رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں. کوئی بیوی کو تسلی دے رہا ہے کہ وہ چلے گئے, کوئی بات نہیں ہے, اللہ تمہاری مدد کرے گا. کوئی بچوں کو تسلی دے رہا ہے, کوئی رشتہ داروں کو تسلی دے رہا ہے. لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا یہ جو گیا ہے اس کا کیا حال ہے. آنے والے, تعزیت کرنے والے کس کو تسلی دیتے ہیں؟ پیچھے رہنے والے کو. کوئی بھائی آیا تو بہن کو تسلی دے گا, بیٹا آیا تو ماں کو تسلی دے گا, باپ آیا تو بیٹی کو تسلی دے گا, ماموں آیا تو بھانجوں کو تسلی دے گا. ان کو تسلی دیں گے, تمہارا باپ کمانے والا تھا, تمہارا باپ چلا گیا, تمہاری ضرورتیں ہیں, وہ تمہاری ضرورتیں اللہ پوری کرے گا, اس لائن کی تسلی دے رہا ہے. لیکن یہ جو گیا ہے, یہ جس نے محنت کر کے اپنا گھر بنایا تھا, جس نے محنت کر کے اپنی دکان بنائی تھی, جس نے محنت کر کے اپنے بچوں کا بینک بیلنس بنایا تھا, جس نے محنت کر کے اپنے بچوں کو ڈگریاں دلوائی تھی, جس نے محنت کر کے اپنی بیوی کو زیورات سے لادا تھا, جس نے محنت کر کے یہ سارا سب کچھ کیا تھا, یہ تو اس دنیا سے نہ بیوی ساتھ گئی, نہ بیوی کے زیورات گئے, نہ بیٹا ساتھ گیا, نہ بیٹے کے بیلنس ساتھ میں گئے, نہ بیٹا گیا, نہ اس کی کار ساتھ میں گئی, سب کچھ اس سے چھین لیا گیا اور تنے تنہا قبر میں پہنچا دیا گیا. اور قبر میں اس کا یہ حال ہے, کہیں تو قبر اسے پیس رہی ہے, کہیں تو اس کے اوپر میں سانپ مسلط ہے, عذاب پر عذاب اس پر آ رہے ہیں, اور یہ دیکھ رہا ہے پیچھے اولاد نہ اس کا نام لیتی ہے, نہ اولاد اس کا کوئی فکر کرتی ہے, نہ اولاد اس کے لیے دعائیں کرتی ہے. باپ نے اپنی اولاد کو دین نہیں دیا, مال دیا, پیسہ دیا, دولت دیا, اولاد کو قرآن پڑھنا نہیں دیا, تو کیا ہوگا کہ یہ اولاد دین سے غافل ہے, یہ اولاد دین سے غافل ہے. اب یہ اگر باپ کو کچھ بخشوانا چاہتا ہے تو بھی کسی استاد کے پاس جاتا ہے کہ ایصال ثواب کر دیجئے. گھر میں کوئی درود پڑھنے والا نہیں ہے, بیٹے کی زندگی میں دین نہیں ہے. دین ہوتا تو باپ کو پاس کچھ نہ کچھ جاتا, نہ دین ہے نہ آخرت کا فکر ہے. مال ہاتھ میں آ گیا ہے, پیسہ ہاتھ میں آ گیا ہے, اولاد کو, انسان کو بغیر دین کے پیسہ مل جانا یہ ایسا ہے جیسے پاگل کے ہاتھ میں بندوق کا تھما دینا. پاگل کے ہاتھ میں بندوق آئی تو یہ پاگل باپ کو بھی مار سکتا ہے, یہ پاگل ماں کو بھی مار سکتا ہے, یہ پاگل بھائی کو بھی مار سکتا ہے. اولاد کی زندگی میں دین نہیں دیا اور مال دے کر باپ دنیا سے چلا گیا, کیا ہوگا؟ وہ عذاب کا شکار ہو چکا, اب اس کا عذاب بڑھ رہا ہے.
अब वो कहेगा भाई मैं तो पहले ही अजाब का शिकार हूँ, ये नया अजाब कहाँ से बढ़ा? तेरी औलाद ने पीछे शराब पिया है, तेरी औलाद ने कारोबार की वजह से नमाज को छोड़ा है, तेरी बीवी ने अपने आप को गलत जगह पर ले गई है, ये सारा तेरे माल की वजह से हो रहा है। तेरे इस माल की वजह से जितने गुनाह होंगे उसका गुनाह उनको तो होगा, लेकिन कब्र में तुझे इनका अजाब भुगतना होगा। तो तने तन्हा इस हाल में वहां पर है, कोई इसका पुरसाने हाल नहीं। और ये कब्र का दिन हक है, हक है, मौत हक है। जो दुनिया में आया है उसको मरना है, और जो मरा है उसे कब्र में जाना है, ये हक है। ये धोखा है सब कुछ, आज और कल, परसों और तरसों, ये धोखा है। आखिरत का दिन और मौत के बाद की जिंदगी का दिन ये हक है, और हम में से हर एक को अपनी कब्र में जाना है। Sekarang kita tinggal di dunia dan seakan-akan segala-galanya dekat dengan kita di dunia. Segala-galanya dekat. Kapan menikah? Menikahkan anak kapan? Besok lusa atau bulan depan. Kapan akan pergi ke sana? Ke satu tempat namanya. Besok atau besok lusa. Jadi karena dunia sekarang di depan kita, seakan-akan dunia itu dekat. Dan akhirat karena nggak nampak, seakan-akan jauh. Nggak ada yang mikirkan. Akhirat masih jauh. Padahal hadir akhirat sangat dekat sekali daripada kita. Karena kalau sudah tiba kematian seseorang, dikatakan kalau tiba kematian seseorang maka mulailah hari kiamat dia tersebut. Jadi kalau kematian sudah tiba maka bermula kehidupan akhirat. Dan kematian kapan datang? Tanpa ada berita. Dia akan datang mendadak. Kadang-kadang tanpa sakit meninggal dunia. Baru sebentar bicara, sebentar detik berikutnya meninggal dunia dia. Baru jalan-jalan meninggal dunia. Pagi hari sehat, sore sudah meninggal dunia. Sore sehat, pagi sudah meninggal dunia. Jadi sebenarnya dan kalau orang sudah meninggal dunia berarti bermula kehidupan akhirat dia. Jadi sebenarnya kehidupan akhirat jauh lebih dekat daripada kehidupan dunia. Tapi karena tidak nampak maka manusia sering tertipu, dikira dia akhirat masih jauh. Padahal kalau sudah kematian menjemput dia, itulah bermula akhiratnya tersebut. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau katakan kalau sudah kematian tiba, maka apa yang terjadi, Pak? Semua dia tinggalkan. Harta yang dia usahakan dia tinggalkan. Anak dan istri dia berpisah. Begitu pula berpisah dengan orang tuanya, dengan ayahnya, dengan anaknya, semua berpisah. Dia akan masuk kubur nanti sendirian. Tidak ada yang akan menemani dia di kubur. Bahkan harta benda yang dia cari, dia capek untuk mengumpulkannya, balance, uangnya begitu banyak, dikumpulkan, tidak ada yang akan dimasukkan ke dalam kubur dia. Dia akan masuk ke kubur dengan sendirian. Hadirin Allah, anak yang dia besarkan tadi, dengan uang dia kerja capek sehingga anaknya mendapat degree, dapat kedudukan, sekarang tidak bisa menemani dia lagi. Begitu pula istrinya yang dikasih kalung, gelang, macam-macam penuh dengan kekayaan. Setelah dia meninggal dunia, maka istrinya pun tidak akan ingat dia lagi. Rumah dibangunkan buat anaknya, buat istrinya, dia tinggalkan semua tersebut. Dia capek untuk mendapatkan keduniaan, dikasihkan kepada anaknya semua, kasihkan kepada istrinya, ditinggalkan. Tapi hadirin Allah, tidak ada satu pun yang dia bawa. Beliau katakan, Allahu Akbar, kalau dia meninggalkan anaknya tanpa agama, tidak sempat memberikan pendidikan agama kepada anak dan istrinya, maka apa yang terjadi? Hadirin Allah, beliau katakan, ajib, misal beliau katakan tadi, orang tua yang meninggalkan warisan berupa harta kepada anak dan istri tapi tidak dikasih agama, itu seperti orang memberikan senjata kepada orang gila. Orang gila dikasih senapan, orang gila dikasih pistol. Maka itulah perumpamaan orang tua, satu orang ayah yang meninggalkan harta yang banyak kepada anak dan istrinya tanpa agama. Yang namanya orang gila, dia akan menggunakan senjata, nembak siapa saja. Ustadz dia tembak, mau ayahnya dia tembak, istrinya dia tembak, orang gila. Begitulah hadirin Allah, uang yang ditinggalkan oleh orang tuanya tadi tanpa ada agama, maka itu anaknya datang sembarangan, jadi narkoba, jadi peminum, pemabok dan sebagainya. Dan hadirin maka Allah, karena dia sendiri tidak mempersiapkan agama, di kubur dia pun disiksa. Dia tidak sholat, tidak berpuasa, tidak mengamalkan agama, disiksa dia. Kemudian hari demi hari siksaan semakin bertambah dan bertambah. Kenapa?
Dia heran, ya Allah, dulu kemarin waktu awal-awal saya dikubur saya disiksa cukup berat, tapi kok demi tambah hari tambah berat lagi siksaan saya, kenapa? Allah katakan, yang pertama dulu itu adalah karena perbuatan kamu tidak mengamalkan agama. Yang tambahan siksa, uang yang kamu berikan kepada anak kamu, sekarang dia gunakan berbuat maksiat. Anak kamu telah berbuat ini dan ini. Istri yang kamu berikan harta yang banyak tadi, ternyata setelah kamu tinggalkan, dia semakin bebas lagi bergaul dengan uang yang banyak. Ini siksa, karena tanggung jawab kamu semua untuk memberikan pendidikan para anak dan istri, tapi ternyata kamu tidak berikan agama, kamu berikan harta, mereka pun akhirnya gunakan harta yang tidak karuan. Ini azab yang berikan kepada kamu. Dan hadirin maka Allah, siksa di kubur bukan kecil. Nanti kalau jengking akan datang, ular akan datang. Jangan dibayangkan kalau jengking yang kecil, paling besar di dunia ini sebesar tapak tangan saja. Ambil sendal pukul sudah mati itu kalau jengking. Tapi kalau jengkingnya dikubur, besarnya seperti onta. Begitu pula ular. Begitu kepalanya itu ular seperti onta besarnya, atau seperti binatang yang besar sekali. Bahkan Nabi SAW katakan, kalau itu ular Pak, menghembuskan bisanya ke dunia ini, maka dunia ini akan kering, tidak ada tanah yang akan tumbuh lagi sampai hari kiamat. Ya Allah. Ya. Itu bisanya ular. Dan dia akan menangis nanti hari. Menangis. Allahu Akbar. Di hari kiamat dia menangis. Bagaimana tangisan dia tadi? Dia menangis, keluar air mata. Bahkan dikatakan begitu banyaknya air mata ini menjadi sungai. Kapal bisa berjalan di atas itu, air mata dia tadi. Air mata biasa, nanti berubah jadi darah, berubah jadi tanah. Hari demi hari semakin bertambah. Hadirin dan Allah Subhanahu wa taala, maka tertipu betul orang yang sibuk dengan mengumpulkan keduniaan. Dia kasihkan kepada anak dan istrinya, tapi agama tidak diberikan. Maka dia bagaimana tadi siksa di kubur yang diberikan oleh Allah. Ini baru awal, belum lagi di akhirat nanti. मेरे भाई और दोस्तों, आखिरत का मसला बहुत ही कठिन मसला है। दुनिया का मसला कठिन नहीं है। दुनिया तो दोस्तों गुजर जाती है। आज की तारीख में जिस आदमी ने $1 मिलियन कमाए उसका भी दिन गुजर गया, और जिसने 1000 रुपये इंडोनेशियन कमाए उसका भी आज का दिन तो गुजर गया। दुनिया तो गुजारे की जगह है, गुजर जाती है। बहुत बड़ी कोठी का मालिक, उसका भी आज का दिन गुजर गया। और ये झोपड़े में रहने वाला प्लास्टिक चारों तरफ लपेट करके, उसका भी आज का दिन तो गुजर गया। दुनिया का मसला नहीं है, मसला आखिरत का है, मौत के बाद का है। वहाँ अकेले जाना है। और ये सारा दुनिया में जो कुछ औलाद, बीवी, बच्चे, जो कुछ है, ये धोखा है। हमें अपने जहन में ये धोखा है, ये धोखा है। पूरी दुनिया गरज वालों की गरजमंद है। इसलिए आपको देखना हो, किसी जगह पर मौत हो जाए, अचानक मौत हो जाए, जरा मैं जो कह रहा हूं उस नजर से आप जाकर के देखो। वो बीवी रोती है तो क्या कहती है? तुम चले गए, बच्चों को कौन संभालेगा? तुम चले गए, पैसे घर में कौन लाएगा? तुम चले गए, हमारे दुख दर्द में हमारे साथ कौन आएगा? अपना रोती है, वो अपना रोती है। औलाद को देखो, औलाद रोती है, क्यों रोती है? उस औलाद को पूछो, अब्बा अभी तो हम छोटे थे, हमारी शादियां कौन कराएगा? हमें कारोबार पर कौन लगाएगा? हमें मेडिकल कॉलेज में कौन ले जाएगा? उस घर में देखो आप, वहां खड़े रहो और खड़े रहकर के अल्फाज को सुनो। हर घर वाला, हर एक रोता है अपनी गरज के लिए। वो चला गया, मैं हमारे काम कौन करेगा? एक नहीं रोता इस पर कि वो चला गया, उसकी कब्र में क्या होगा, उसके कब्र के हालात क्या होंगे। एक नहीं रोता कि मेरा बाप अपनी कब्र की तैयारी नहीं कर सका, मेरा बाप अपनी आखिरत को नहीं बना सका, मेरा बाप हमारे वसाइल की वजह से ये नहीं कर सका। इस पर रोने वाले बहुत कम हैं। हर एक रोता है, चाहे मेरे बच्चे हो, मेरी बीवी हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपकी बीवी हो, ये सब रोते हैं अपनी गरज के लिए। कब्र में तो तन्हा अकेले जाता है। और जानते हो कब्र की आग कितनी सख्त है, कितनी सख्त है, उसको हम कैसे बयान करें। एक बहुत पुराना पर्चा मेरे हाथ में आया था, एक किस्सा मैं कह दूं। तो उन्होंने कहा कि एक आदमी आया जिसको लोग तुर्की शाह कहते थे। उनको उन्होंने देखा तो उसके हाथ की ये उंगलियां दो
एक पानी का डिब्बा है, इसमें पानी है और इसकी ये 2 उंगलियां जो है वो पानी में डूबी हुई है और वो पानी का डिब्बा उसके पास बंधा हुआ है। इसी हाल में वो जा रहा है, आज कहीं बैठता है, उठता है, हर हाल में ये। उससे किसी पूछने वाले ने पूछा कि क्या है तुम्हारा ये क्या हुआ तुमको? उसने कहा बड़ा अजीब मसला है। कहा हुआ क्या ये बताओ। उसने कहा मैं कफन चोरी करता था, एक मैयत का मैंने कफन चोरी करने के लिए उस मैयत को खोला। वो मैयत किसी मालदार की थी। मैंने सोचा अच्छा कफन मिलेगा, मालदार की मैयत थी। वो मालदार की ज़िंदगी में ज़कात का एहतमाम नहीं था, ज़कात अदा नहीं करता था। खैर मैंने उस कब्र को जब खोला तो खोलने के बाद में कफन का हिस्सा तो खुला हुआ था। वहाँ मैंने देखा ये सिक्के आते हैं रुपये के, दीनार के सिक्के उसकी छाती पर, उसके यहाँ ये अलग अलग जगहों पर ये पड़े हुए हैं। मैं हैरान रह गया, मैं तो चोर था कि यहाँ तो कफन लेने आया था और यहाँ तो दीनार मिल रहे हैं। ये दीनार को मैंने पकड़ने के लिए अपनी ये 2 उंगलियों से हाथ लगाया। जहां मेरी उंगली, ये दोनों उंगलियां उससे टच हुई, मुझे एकदम से झटका लगा और झटके के साथ मैं बाहर गिरा। इतना ही नहीं, उस दिन से इन 2 उंगलियों में इतनी जलन है कि न मुझे खाते, न मुझे पीते, न सोते, किसी वक्त में चैन नहीं। वो उस ज़कात के रोकने वाले पर अल्लाह का अज़ाब था, जो अल्लाह मियाँ कहते हैं कि हम उसके पतरे बना करके दागेंगे, वो अज़ाब था। उसमें वो आग का करंट था। उसने कहा मुझे ये हुआ है। तो पूछने वाले ने ये पूछा कि ये हाल तुम्हारा कितने साल से, ये जलन तुम्हारी कितने साल से है? उसने कहा 35 साल हो चुके, 35 साल हो चुके, अब तक वो जलन मेरी ख़त्म नहीं होती, जिसकी वजह से गुनाह तो क्या, मैं दीनदार बन गया, मैं नेक बन गया, मैंने चोरी छोड़ दी, सब कुछ मैंने छोड़ दिया, लेकिन वो अज़ाब इलाही को ज़रा सा मैंने छुआ है, उसका असर मुझ पर यह है कि अब तक मेरी ये जलन नहीं जाती। ये कब्र का अज़ाब है, बराह रास्त आग नहीं, वो पत्थरों को जो दागा गया है उस कब्र का अज़ाब है मेरे दोस्तों। और ये कोई किस्से कहानी की चीज़ नहीं है। मरते ही कब्र में जाना है और मरते ही ये मसाइल मेरे और आपके सामने आने वाले। Beliau katakan saat orang meninggal dunia, tadi beliau katakan orang pun pada menangis. Kemudian banyak orang yang takziah datang, ingin memberikan tasliyah, kegembiraan. Sabar, suami kamu meninggal dunia. Begitu pula anaknya menangis, katakan sabar, ayah kamu meninggal. Insya Allah Allah akan pelihara kamu. Nanti saudaranya datang, dia akan memberikan kabar, menggembirakan kakaknya. Seorang ayah datang, menggembirakan anaknya, bahwa suami kamu meninggal, sabar saja, dan sebagainya. Semua orang yang datang tadi berusaha untuk menghilangkan kesedihan orang-orang yang ditinggalkan yang meninggal. Tapi siapa yang sekarang menggembirakan orang yang dikubur? Siapa? Ya Allah. Semua yang menangis tadi diusahakan, digembirakan, sabar, semua mengatakan. Tapi yang mengatakan dikubur, sabar, siapa? Siapa akan memberikan kegembiraan kepada dia? Dan ingat beliau katakan, semua apa yang kita lihat di dunia nih, maaf, anak, istri kita, itu adalah tipuan belaka. Tipuan fata morgana saja, nggak ada hakikatnya, beliau katakan. Dan semua orang yang menangisi kita di kubur, saat orang meninggal dunia, menangis semua. Itu mereka menangis bukan karena untuk si mayat, tidak. Karena mereka punya kepentingan masing-masing di balik tangisan mereka. Kenapa istri menangis saat suami meninggal dunia? Dia menangis dan menangis karena dia tahu mulai hari ini siapa yang akan beri makan kepada aku. Dia menangis bukan karena kasihan suaminya, bagaimana dikubur, bagaimana, tidak. Tapi dia menangis karena merasa kehilangan orang yang biaya dia. Anaknya menangis dan menangis. Untuk siapa tangisan tersebut? Bukan untuk ayahnya, tangisan untuk dia sendiri. Dia katakan, ayah saya masih sekolah, belum selesai lagi kuliah saya, perlu biaya banyak, kenapa engkau meninggal dunia? Tangisannya bukan untuk ayah tapi untuk dia sendiri.
Begitulah yang lain-lain menangis dan menangis hadir. Bukan menangis isi mayat, tapi dia menangis punya keperluan. Punya keperluan yang dia menangis dengan kepergian si mayat tadi, maka pembiayaan dia pun akan berkurang dan berkurang. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, itu anak, istri yang punya harta yang banyak tadi. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia lupa bahwa dia menangis dan menangis sebentar tadi. Dia tidak tahu apa yang terjadi buat ayahnya. Quran pun tidak dibacakan dan lain-lain. Paling banter, dia ambil sedikit uang dikasihkan kepada ustaz, dikasihkan kepada anak yatim piatu pada pesantren, tolong bacakan Al-Quran buat ayah saya. Sementara amal dia tidak baik. Apakah dengan sedikit uang yang dikasihkan kepada ustaz, kepada para santri akan menyelamatkan dia di kubur? Hadirin Allah Subhanahu wa taala, semua yang kita lihat adalah tipuan. Nanti dia akan berhadapan sendiri dengan malaikat maut, berhadapan dengan munkar wa nakir, berhadapan dengan siksa kubur. Berat itu siksa kubur, beliau katakan tadi. Saya bertemu dengan satu orang, beliau katakan, dia menceritakan, karena cerita dahulu, satu orang, dia tangannya dilipat begitu, kemudian ditaruh ada satu botol air. Kemana-mana dia pergi senantiasa dibawa begitu, tangannya diperban, kemudian masukkan dalam air, jalan terus gitu. Jadi orang perhatikan dia heran, kenapa nih orang senantiasa meletakkan, menggipitkan tangannya, dikasih perban, dimasukkan dalam air. Akhirnya ditanya, hei saudara, ada apa kamu sakit? Apakah kamu letakkan senantiasa tangan kamu dalam air, dalam botol tadi? Dia katakan, saya ini kerja saya adalah pencuri kain kafan. Jadi setiap mayat yang meninggal dunia, khususnya orang-orang kaya, saya tahu kain kafannya mahal-mahal. Maka setelah pemakaman orang pun sudah kembali. Nanti waktu orang sepi malam hari atau pada waktu sepi, saya bongkar, saya ambil kain kafannya, saya jual. Itu kerjaan saya. Dia katakan satu saat ada orang kaya, hartanya banyak, tapi dia nggak ada perhatian kepada zakat, jarang bayar zakat. Maka saya pikir di kain kafannya pun mahal. Saya bongkar kubur dia. Setelah saya bongkar, saya pun mulai lepaskan kain kafan dia satu, dua, kemudian yang ketiga. Tapi setelah saya buka kain kafan, ternyata ada koin-koin uang, uang dinar. Satu di sini, satu sini, satu sini, banyak sekali. Maka saya heran, kok saya datang untuk mencuri kain kafan? Ternyata banyak dinar-dinar di badan dia ini. Jadi gambaran dia tentu dia akan mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Hanya niatnya untuk mencari kain kafan, mencuri kain kafan, ternyata dapat uang-uang dinar banyak. Maka dia katakan, saya pun mulai mengambil satu koin tadi. Tapi ketika saya dekatkan tangan saya dan ingin mengambil dengan dua jari saya ini, saya letakkan langsung, saya lompat kepanasan kaget. Dan saya pun tinggalkan itu kubur. Dan saya ketakutan akhirnya. Dan ternyata itu panas yang ada di tangan saya nih, karena sentuhan kepada itu dinar tadi, masih saya rasakan panasnya sampai hari ini. Ya Allah. Maka kemana-mana saya pergi, saya letakkan dalam air untuk mengurangi panasnya tersebut. Dia katakan, sejak saat itulah saya bertobat daripada mencuri. Dan saya tahu bagaimana siksa yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang tidak mau bayar zakat. Koin-koin, uang-uang yang dia miliki tadi, malah menjadi setrika di badan dia tersebut. Dan dia katakan, hadirin, saya dari hari itu saya berhenti mencuri, saya pun bertobat, dan saya sekarang menjadi orang yang taat, alhamdulillah, nggak pernah lagi berbuat maksiat dari Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, sejak berapa tahun itu kejadian? 35 tahun yang lalu. Ya Allah. Sudah 35 tahun hadirin, baru sentuhannya kepada itu dinar saja, belum lagi hilang itu panasnya. Bagaimana dengan orang yang dikubur, yang nempel itu uang-uang dinar yang membakar dia tersebut? Hadirin Allah, ini bukan perkara kecil, besar, azab pun besar. Itu baru awal daripada akhirat, belum lagi seterusnya dan seterusnya. मेरे दोस्तों और भाइयों, ये ज़िंदगी हम सब की मौत के बाद में कब्र आने वाली है। दुनिया में हम इत्मीनान, चैन, सुकून से रहे, ये दुनिया तो गुजर जाने वाली है, चाहे सुकून से रहे चाहे मुसीबत पर रहे। मसला आखिरत का है। इन सारे मसाइल का, अब आखिरत का मसला हमारा हल हो जाए, मौत हमारी आसान हो जाए, कब्र हमारी जन्नत का बाग बन जाए, कब्र में जन्नत की खिड़की खुल जाए,
قبر میں جنت کی ہوائیں آنے لگے. قبر میں جائے تو اللہ پاک اس سے پہلے جنت کا مکان دکھا دے اور قیامت تک آرام سے سو جائے. میدان حشر میں اٹھے تو ہم آرام سے, ساری دنیا پریشان, اور عرش کے نیچے سایہ ملے, اور پھر ہمارے اعمال نامے دانے ہاتھ میں ملے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر ملے, پلسرات آسان ہو جائے, جنت میں داخل ہو جائے, اللہ کی رضا مل جائے. یہ سارے مسئلوں کے حل کے لیے اللہ رب ہے. اللہ نے اپنے بندوں کو اپنا دین دیا ہے, اپنے نبیوں کے ذریعے سے دین دیا ہے, اور یوں کہہ دیا ہے دیکھو تمہیں کوئی لمبی چوڑی محنت نہیں کرنی, یہ دین پر محنت کر کے دین اپنی زندگی میں لے آؤ. اگر تمہاری زندگیوں میں دین آ گیا اور دین تم نے اپنی زندگی میں داخل کر دیا, ہر حال میں تمہاری دنیا کی زندگی خوشگوار بنا دوں گا, اور موت کے بعد کی زندگی کے جتنے مسائل ہیں وہ سارے حل کر دوں گا. دین کو بنیاد اور فیصلہ کر دیا. دین جس کی زندگی میں ہوگا, ہر حال میں غریب ہو, امیر ہو, حاکم ہو, محکوم ہو, پڑھا لکھا ہو, ان پڑھ ہو, عربی ہو, عجمی ہو, مرد ہو, عورت ہو, کالا ہو, گورا ہو, کوئی بھی ہو, جس کی زندگی میں دین ہوگا اللہ اسے کامیاب کر دیں گے, اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا اللہ اسے ناکام کر دیں گے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور قیامت تک کے لیے فیصلہ ہے. Dan kehidupan yang di sana diselesaikan dengan adanya agama di permukaan dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan agama kepada manusia agar dia mendapatkan keselesaan, kebahagiaan di dunia yang sementara, bahkan sampai di akhirat yang berlanjut yang kekal selama-lamanya. Dikubur orang yang mengamalkan agama dalam kehidupan ini, Masya Allah, kenikmatan demi kenikmatan akan dia dapatkan. Kebun menjadi kebun, taman di depan tanaman sorga. Kelihatannya tanah, pada itu adalah taman-taman sorga. Dibukakan nanti pintu untuk menembus sorga sehingga dia mencium haruman sorga tiap hari. Allah. Dan sorga yang akan dia tempati dia lihat pagi dan petang di kubur dia tersebut. Begitu pula hadir Allah, dia akan dibangkitkan nanti berada di bawah naungan arsy Allah. Orang kepanasan, dia sementara dalam kesejukan. Akan meliti tensiran seperti kelak dengan cepat sekali di mizan, bahkan nanti akan minum dari telaga Kausar dari tangan Rasulullah SAW sendiri. Begitu nanti kehidupan dia di sorga. Dari itu semua hadir Allah ingin berikan kepada hamba-hambanya. Dengan Allah berikan agama kepada manusia hadir untuk kebahagiaan. Kalau kamu mengamalkan perintahku, kata Allah, kalau kamu melaksanakan hukum-hukum aku, menjauhi segala larangan, di dunia aku akan berikan sebagai bonus saja, tapi nanti di akhirat adalah kenikmatan-kenikmatan yang selama-lamanya, bahkan semakin hari semakin ditambahkan ya Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadirin pentingnya agama dalam kehidupan. Dan agama tidak akan datang tanpa ada usaha. Maka kalau kita berusaha agama, enggak lama, sebentar saja nanti akan mendapatkan kebahagiaan selama-lamanya. دین پر اللہ کا وعدہ ہے. دین زندگیوں میں ہوگا تو حق تعالی شانوں کا وعدہ اس دنیا میں برکت کا ہے. دین زندگیوں میں ہوگا اللہ کا وعدہ عزت کا ہے. دین زندگیوں میں ہوگا اللہ جل شانوں کا وعدہ اللہ سر بلندی کا ہے. یہ سارے وعدے جتنے خود دنیا کے ہیں وہ سارے وعدے دین کے ساتھ ہیں. موت کے بعد کے سارے وعدے دین کے ساتھ ہیں. دین پر اللہ کامیاب کریں گے, دین پر اللہ زندگی بنائیں گے. لیکن ایک بات میرے دوستو, پورا مجمع یہ سمجھو, اللہ کے وعدے پورے دین پر ہے, اللہ کے وعدے ادھورے دین پر نہیں ہے. دنیا میں کوئی ادھوری چیز کی قیمت نہیں ملا کرتی. آپ نے ٹیلر کے پاس وہ کرتا سینے کے لیے دیا, اس نے ادھورا سیا, 2 آستینیں نہیں لگائی اور آپ کو دے دیا, آپ اس کو اجرت نہیں دیں گے. آپ نے کسی کو گھر بنانے کے لیے بلایا, اس کو کانٹریکٹ دے دیا, اس نے ادھورا بنایا, آپ اس کو اس کی اجرت نہیں دیں گے, آپ نہیں دیں گے. ادھوری چیز کا کوئی بھاؤ نہیں ملا کرتا, ادھوری چیز کا کوئی بازار میں قیمت نہیں ہوتی. اللہ نے جتنے وعدے قرآن اور حدیث میں کیے ہیں یہ پورے دین پر کیے ہیں, ادھورے دین پر نہیں کیے. Dan hadirin kita sabarkan diri kita, jangan keluar daripada ini majlis.
Bahkan Nabi SAW sabdakan, kalau tidak memberatkan umatku akan aku akhirkan Isya sampai sepertiga malam. Jadi mengakhirkan sholat Isya sampai sepertiga ini merupakan juga salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan berarti meninggalkan sunnah, tidak. Justru kita menghidupkan salah satu daripada sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Nanti selesai bayan kita akan azan juga akan sholat juga bersama. Kemudian beliau katakan, hadir Allah, dalam agama ada janji-janji Allah. Dalam kebendaan kedudukan tidak ada janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam agama itu ada janji Allah. Kalau agama diamalkan dalam kehidupan di dunia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat. Begitulah izzah, kemuliaan akan diberikan oleh Allah. Pemeliharaan, perlindungan, semua kenikmatan, kebahagiaan dunia ini Allah berikan kalau ada agama dalam kehidupan. Begitulah hadirin Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat diberikan kenikmatan-kenikmatan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala juga karena ada agama. Jadi agama bukan hanya menjanjikan kebahagiaan di akhirat, dunia akhirat diberikan dengan adanya agama. Tapi agama yang mana? Agama yang sempurna diamalkan. Udkhulu fi silmi kafah. Jadi kalau agama secara kafah diamalkan, baru ada sempurna janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau agama diamalkan separuh-separuh saja, maka agama yang diamalkan separuh-separuh tidak akan membawa kebahagiaan. Seseorang bekerja, membangun rumah sebagai kontraktor dia, disuruh bangun, separuh dia kerjakan, dia pergi, apakah akan dibayar dengan sempurna? Dia sebagai buruh, kerja baru separuh dia tinggalkan, akan dapat upah dia? Pekerjaan-pekerjaan dunia saja yang tidak diselesaikan dengan benar, tidak akan ada janji. Apalagi akhirat yang begitu besar hadirin. Maka kapan janji-janji Allah diberikan kemuliaan di dunia, kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan, begitu nanti di akhirat adalah kalau agama dikerjakan secara sempurna, secara keseluruhan, bukan sebagian-sebagian. मेरे भाई और दोस्तों, आज मुसलमान सहाबा भी दीन पर चले, कामयाब हो गए और ज़िंदगी अल्लाह ने बना दी। दुनिया में अल्लाह ने बरकतें दी, दुनिया में अल्लाह ने इज़्ज़तें दी, दुनिया में अल्लाह ने उनको सरबुलंद किया और मौत के बाद में इतने ऊंचे मकाम पर चले गए कि आज 1400 साल हो गए, सहाबा का नाम हर आदमी इज़्ज़त से लेता है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के तमाम शोबों में दीन को दाखिल किया। इसे समझो, दीन पूरा, दीन किसी एक अमल का नाम नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका लेकर आप तशरीफ़ लाए, उस पूरे तरीके का नाम दीन है। ये दीन ज़िंदगियों में मतलूब है। एक आदमी कलमा पढ़ रहा है, नमाज उसके पास नहीं, नमाज पढ़ रहा है, माशरत उसके पास नहीं, मामलात उसके नहीं। दीन 5 चीज़ों के मजमूए का नाम है। सुनो मेरे साथियों, 4 महीने लगाओ, चिल्ले लगाओ, इल्म हासिल करो, जो कुछ भी करो, इन तमाम चीज़ों के ज़रिए से मकसूद जो है अपनी ज़िंदगी में दीन को दाखिल करना है। दीन ज़िंदगी में आए। दीन किसे कहते हैं? दीन 5 शोबों का नाम है। एक आदमी कलमा पढ़ के इस इमारत में दाखिल हुआ, अब उसके सामने 5 बड़े बड़े शोबे हैं। ईमानियात, अकायदात जिसे कहते हैं, हमारा ईमान हो, ईमान हमारा हो किस पर? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर, ये सारी चीज़ें ईमान में। एक अल्लाह की ज़ात पर ईमान, एक अल्लाह की ज़ात पर, और एक अल्लाह की ज़ात पर यकीन, करता धरता, मारने वाला, जिलाने वाला, हिफाजत करने वाला एक अल्लाह है, उसका यकीन, उसका यकीन। और अल्लाह की ज़ात पर, और अल्लाह ने जो किताबें नाजिल की है, वो इल्म जो नबी लेकर के आए, उस पर ईमान हमारा। अल्लाह व मलाइकतिही, खुदा का गैबी निज़ाम जो है, उस गैबी निज़ाम पर पूरा यकीन, पूरा आलम जकड़ा हुआ। वल यौमिल आखिर, आखिरत के दिन का यकीन, कल का दिन मशकूक, कल आवे ना आवे, आखिरत का दिन यकीन, ये ईमानियात है। इसके अलावा कोई चीज़ न रहे, एक बाब ईमानियात का है। इसको इस पर मेहनत करके, इसलिए कि अल्लाह के यहाँ मामला दोस्तों ऐसा है, इबादत में कमी तो वहाँ बर्दाश्त हो जाएगी, लेकिन ईमान के मामले में तो फरमाते हैं अना अगना शुरका। ईमान में ज़रा भी मिलावट अल्लाह में इसको बर्दाश्त नहीं करते, ये बर्दाश्त। इसलिए साफ कह दिया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही,
कि शिर्क के साथ तो माफ़ी हमारे यहाँ नहीं। शिर्क क्या है मेरे दोस्तों? कोई बूत को पूछता है, कोई चीज़ों को पूछता है, और किसी का यकीन उसका अपने बूत पर यकीन है, मेरा बूत मेरा मसला हल कर देगा। और एक का यकीन दुकान पर है, ये दुकान है तो मैं पलता हूँ, दुकान नहीं तो मैं नहीं पल सकता। ये दुकान है तो इज्जत है, ये दुकान नहीं तो जिल्लत है। एक का नौकरी पर ईमान है, साहब ये नौकरी है तो मेरी जिंदगी है, नौकरी नहीं तो मैं क्या खाऊंगा, मुझे कहाँ से खिलाएगा। कोई कहेगा अल्लाह मियाँ खिलाएगा, अल्लाह मियाँ कहाँ से खिलाएगा। ये ईमान के खिलाफ चीज़ है। अंदर में एक ही बात, उस ईमान पर मेहनत करनी, ईमानियात का मुतालबा है, और वहाँ बहुत शिद्दत के साथ है, इसमें ज़रा भी कमी नहीं। तो पहला बाब ईमानियात का है कि ईमान ज़िंदगी में आ जाए। ईमान ज़िंदगी में आ गया, सारी चीज़ें आसान होती चली जाए। Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka berjalan di atas agama atau mereka mengamalkan agama secara keseluruhan, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kepada mereka di dunia ini, apalagi di akhiratnya Allah. Sudah 14 abad berlalu, sampai sekarang kita masih memuji-muji para sahabat. Bahkan nama-nama anak-anak kita pun nama-nama para sahabat radhiyallahu anhum. Semua orang mengatakan radhiyallahu anhum kepada para sahabat. Nama-nama anak mereka dinamakan dengan anaknya para sahabat. Kenapa? Di dunia saja sudah nampak kemuliaan mereka, apalagi di akhiratnya Allah, karena mereka mengamalkan agama secara sempurna. Nah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau agama diamalkan dengan sempurna, janji Allah pasti Allah berikan. Kalau agama dikerjakan hanya sebagian-sebagian saja, maka hadirin tidak ada janji Allah diberikan kepada ini umat. Di dunia tidak akan mendapatkan kejayaan, apalagi di akhiratnya Allah. Kemudian agama bukan hanya bagian-bagian, hanya sholat saja atau puasa, tidak, tapi agama mencakup 5 perkara yang dijelaskan oleh ulama kita. Jadi agama akan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, dari bangun tidur sampai tidur kembali, dari pagi sampai petang, petang sampai pagi. Itu agama mengatur kehidupan manusia dalam segala lapangan dia, dalam pertanian, perdagangan, perekonomian, dalam pekerjaan dia, hubungan antara seorang bos dengan anak buahnya, antara seorang raja dengan rakyatnya. Ini diatur oleh agama semua. Maka beliau katakan bahwa agama terdiri pada 5 perkara. 5 ini yang namanya agama. Pertama imaniyah atau akidah, yang kedua ibadat, yang ketiga muasyarah, yang keempat muamalah, dan yang kelima akhlakiyah. Ini namanya agama. Pondasinya pertama sekali. Jadi kalau kita masuk satu gedung, maka terdiri pada 5, itulah namanya gedung tadi hadir. Maka Islam, yang namanya Islam bukan bagian-bagian, 5 tersebut itu yang namanya Islam sempurna. Yang pertama imaniyah, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada para rasul, beriman kepada kitab-kitab, beriman akan adanya hari kiamat, kebangkitan. Ini iman. Dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini puncak daripada iman. Bagaimana kita tanamkan keyakinan di hati kita bahwasanya tiada yang disembah dengan sembahyang kecuali Allah, tidak ada yang memberikan manfaat dan kemudaratan kecuali Allah, tidak ada yang bisa memberi kecuali Allah, tidak memberikan sehat atau sakit kecuali Allah. Ini tanamkan di hati kita. Dan hadir maka Allah Subhanahu wa taala, kalau orang ada kelemahan, kurang, cacat dalam ibadah, masih ditoleransi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada cacat dalam iman dia, maka tidak ada ampunan. Di dunia tidak akan mendapatkan ketenangan, apalagi di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ibadah barangkali ada kekurangan, bisa ditutupi, tapi kalau iman kurang, hari ini hadir Allah. Jadi Allah tidak menyenangi adanya kesyirikan dalam hati kita. Beliau katakan dulu kalau orang-orang menyembah berhala, dia yakin berhala dia berikan kemanfaatan, kemudaratan kalau nggak disembah. Orang dahulu nih. Tapi sekarang juga hadir. Mungkin kita tidak menyembah berhala. Saya masing-masing orang tahu. Saya ini kerja di toko untuk apa? Loh, kalau saya nggak kerja di toko makan apa saya? Kalau bos saya nggak ngasih duit, saya mau makan apa? Kalau saya nggak kerja di sana, mau makan apa saya? Bagaimana kehidupan saya? Hadir Allah Subhanahu wa taala meyakini bahwa saya berhala memberikan manfaat dalam kehidupan, itu juga syirik. Sama meyakini bahwa saya toko saya, pertanian saya, perdagangan saya, bos saya, raja saya memberikan kemanfaatan, itu juga merupakan kemusyrikan yang ada di hati kita. Makanya harus dibersihkan. Beriman kepada para malaikat. Ini alam semua bukan berjalan otomatis dengan sendirinya, tidak. Tapi diatur oleh Allah. Allah gunakan malaikat-malaikat yang menjalankan untuk matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Setiap satu biji gandum yang tumbuh itu ada malaikat yang Allah kirimkan untuk menjaganya.
Jadi ini alam berjalan bukan dengan sendiri diatur oleh Allah. Allah gunakan para malaikat untuk mengendalikan itu semua. Dan Allah sebenarnya tidak berhajat kepada malaikat tadi, tapi untuk memperlihatkan bagaimana kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Beriman hari kiamat pasti akan tiba, tidak akan selama-lama di dunia. Itu iman hadirin kita hendaklah tanamkan dalam diri kita. ये ईमानियात पर जो ईमान मेहनत की चीज़ है मेरे दोस्तों, जैसे मेहनत आदमी करता जाता है ये ईमान अंदर में आता जाता है। अंदर में ईमानी पावर जितना आता जाएगा इतना आदमी दीन पर चलता जाएगा। जब इस ईमान पर मेहनत करके इस ईमान को लाए तो पहली चीज़ जो ज़िंदगी में ज़िंदा होगी वो इबादत ज़िंदा होगी। ईमान पर मेहनत के नतीजे में इबादत ज़िंदा होगी कि साहब अब इबादत इसकी ज़िंदगी में होने लगी कि एक आदमी नमाज भी नहीं पढ़ता था, कुछ भी नहीं करता था, अल्हम्दुलिल्लाह दीनी माहौल में आया, जमात में आया, बैठा, तालीम के हलकों में बैठा, गश्तों में चला, चिल्ला लगा दिया। अब क्या हुआ, उनका नमाज उसके लिए आसान हो गई। इबादत का दीन वो ईमानी पावर आया कि उस ग्रेड के पावर से पहला जो ग्रेड का पावर आता है उससे इबादत आसान हो जाती है कि नमाज पहले नहीं पढ़ता था, उससे अगर कोई पूछता था तो साहब मेरे लिए मुश्किल, फजर में मैं सो जाता हूँ और ज़ोहर में मेरा कारोबार का वक्त होता है, असर में मेरे दोस्तों से मिलने का वक्त होता है, मुझसे नहीं पढ़ी जाती। लेकिन वही नौजवान जब अल्लाह की राह में निकलता है और ईमानी माहौल में रहता है तो उसका ईमान बढ़ना शुरू होता है। अब वो ईमान बढ़ा तो इतना बढ़ा कि साहब ये जब वापस आया तो तहज्जुद ये पढ़ रहा, फजर ये पढ़ रहा, इशराक ये पढ़ रहा, चाश्त ये पढ़ रहा है, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, अवाबिन, तो सब सारी नमाजें ही पढ़ रहा है। क्यों? उसके ईमान में इतना पावर आया कि उसके लिए इबादत की लाइन का दीन आसान हो गया। अब ये जिक्र करने वाला बन गया, ये कुरान की तिलावत करने वाला बन गया, ये मस्जिद में आने जाने वाला बन गया कि ईमान पर मेहनत हुई। ईमान में जितनी ताकत आई तो पहली ताकत से इबादत की लाइन का दीन उसके लिए आसान हो जाता है। Kita keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Itu bukan tujuan, tidak. Tapi itu sarana untuk bagaimana supaya Islam secara sempurna tadi kita dapatkan. Jadi tujuan saya keluar jalan Allah sampai 4 bulan, 1 tahun sebagainya, bagaimana saya bisa mengamalkan agama secara keseluruhan. Ini yang kita inginkan. Bukan sekedar sertifikasi, Pak. 4 bulan, bukan. Bagaimana supaya itu agama 5 tadi kita amalkan dalam kehidupan. Hadirin Allah, utamanya iman. Ini adalah kekuatan kekuatan dalam nih. Iman kadang-kadang kecil, lama-lama membesar. Sesuai dengan kekuatan iman, nanti ada orang kekuatan beribadah. Dan imannya harus diusahakan. Maka kita keluar jalan Allah usaha atas iman. Bagaimana iman yang ada nih? Lagi-lagi kita hidup dalam suasana iman selama sekian hari, sekian bulan berada, bicara kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan orang bicara kebesaran Allah. Begitu pula kita memikirkan kebesaran Allah, melihat bagaimana kita dengan pandangan agama. Hari demi hari iman kita semakin hari semakin kuat. Nah, kalau iman kita sudah kuat hadirin, nanti ada kekuatan untuk menggerakkan anggota tubuh kita untuk mentaati perintah Allah. Tadinya dia berkata, aduh saya susah betul nih, sholat subuh nggak bisa, susah untuk bangun, zuhur saya sibuk sekali di toko saya, alangkah ramai yang datang, asar ini waktu saya untuk jumpa dengan kawan-kawan, apalagi maghrib sudah capek, berat untuk mengerjakan sholat. Tapi setelah dia keluar jalan Allah, hidup dalam suasana iman, 3 hari, 40 hari, 4 bulan, itu pemuda. Orang yang tadinya bicara, saya nggak ada kesempatan untuk sholat, susah sekali. Sekarang Masya Allah 5 waktu nggak pernah ketinggalan daripada sholat berjamaah. Bukan itu saja, dia ternyata sholat sunat, isyraq, awabin, duha, tahajud, witir nggak pernah dia tinggalkan. Kenapa? Karena iman di dalam tadi yang menggerakkan dia untuk mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin besarnya iman, semakin ada kekuatan untuk mengamalkan hukum-hukum Allah. Ibadah dia pun akan baik, sehingga dia mulai berzikir, mulai membaca Al-Quran, senantiasa hidup dia penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekuatan ibadah, tenaganya, powernya adalah daripada kekuatan iman. Jadi beliau katakan, hadirin yang dimuliakan Allah, dengan kita keluar jalan Allah, bicara iman, mendengarkan iman, hidup dalam iman kita meningkat.
Sampai dia keluar 4 bulan jadi Allah, sehingga ibadahnya pun mulai bagus. 5 waktu dia sholat, dia berzikir, dia baca Al-Quran dan sebagainya. Tapi beliau katakan ini sering yang terjadi kesalahan dalam kehidupan kita ini, bahwasanya kalau sudah keluar 4 bulan, ibadah pun sudah mulai kerjakan, bahkan dia sudah haji umrah, alhamdulillah saya sudah mengamalkan agama dalam kehidupan, dia sudah merasa cukup, sampai di sana mulai stop dia. Jadi iman yang dia dapatkan dengan 4 bulan tadi atau keluar 40 hari membuat dia ibadah rajin, semangat, lantas dia berhenti. Dia katakan alhamdulillah saya sudah keluar 4 bulan, saya sudah kartu lama, alhamdulillah saya sudah beribadah, bahkan sudah haji dan umrah. Hadirin subhanahu wa ta'ala, agama tidak hanya sampai kepada batas iman kemudian ibadah, tidak, masih ada lagi peringkat berikutnya, muamalah, muasyarah dan juga akhlak. Hadirin maka Allah subhanahu wa ta'ala harus kita sempurnakan, dan ini harus terus menerus. Beliau katakan kita biasa makan, apalagi di sana nih kita makan kambing, maka tangan kita pun ada lemak-lemak, nggak cukup dengan diisi dengan air dingin, maka kita perlu hangatkan itu air, mungkin cukup 5 derajat saja, kita bersihkan, hilang itu lemak. Tapi kalau kita mau minum teh, bikin teh susu, maka perlu dipanaskan lagi. Sekarang kita ingin masak daging lagi, maka dibakar lagi, dipanaskan lagi yang lebih kuat lagi, supaya itu daging jadi matang. Dokter operasi, dia alat-alat sudah digunakan operasi, maka banyak kuman-kuman, maka untuk menjaga, membersihkan itu alat-alat kedokteran tadi dari kuman-kuman, diperlukan air yang sangat panas sampai 99,9 derajat supaya dihilangi itu kuman. Kalau cuma 5 saja, maka kuman pun akan bertahan. Begitulah hadirin perumpamaan kita ini. Kita bergerak keluar jalan Allah, mulai naik iman kita, ibadah kita mulai naik. Tapi kalau kita berhenti sampai di sana saja, apa yang terjadi? Hadirin Allah, beliau katakan, Nabi telah menjelaskan, orang sudah beriman, beribadah, tapi muamalah dia tidak benar. Muamalah dia tidak benar. Dia tidak panaskan lagi iman dia, enggak istiqamah dalam keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi, Pak? Makanan yang haram masuk ke balut mulut dia. Maka semua ibadah dia dilemparkan ke muka dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat yang dia kerjakan tadi, begitu semangatnya dia tahajud, maka dilipat seperti kain gombal dilemparkan ke muka dia lagi. Kenapa? Karena dia salat dengan makanan yang haram masuk tubuh dia, pakaian yang haram. Dia pergi haji, pergi umrah, bergantung di kelambu Ka'bah, menangis dan menangis. Allah katakan, wahai hambaku, tangisan kau tangiskan, silahkan menangis di depan Ka'bah, tapi uang yang kamu bawa untuk datang dari uang yang haram, pakaian yang haram. Jadi walaupun dia bergantung di kelambu Ka'bah, tangisan dia tidak akan diterima Allah, bahkan dilemparkan seperti kain gombal ke muka dia lagi. Utang tidak dibayar, walaupun dia mati sebagai seorang syahid tidak akan bisa masuk surga. Maka ini memerlukan lagi, panaskan lagi supaya muamalah saya jadi benar, sehingga akan menjaga ibadah kita dan iman kita pun akan senantiasa bertahan. मेरे दोस्तों और भाइयों, ये हमारी बहुत बुनियादी चीज़ है। मामलात का दीन अगर ज़िंदगी में नहीं आया तो हमारी तो सारी पूंजी जाएगी। मामलात के दीन से मुराद मैं जो कमा रहा हूँ, मेरी तिजारत, हर आदमी तिजारत जो करता है, मेरी बिजनेस शरीयत पर है या नहीं है? मेरी बिजनेस में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हराम हो जाती हो। यानी उस पर जितना ईमान अंदर में बढ़ता चला जाएगा, आदमी की निगाह मजबूत होती जाएगी, वो उसे जहर समझेगा। 1 रुपया हराम का पेट में चला गया, वो उसे जहर समझेगा। जैसे दुनिया का इंसान, अगर किसी के बच्चे 3-4 दिन से भूखे हैं, कोई घर में खाना नहीं, बाप परेशान है, माँ परेशान है, बच्चे परेशान है, बच्चे एड़ियाँ रगड़ रहे हैं। इस हाल में उसका बाप बाहर निकला, गांव था, बाहर कोने में देखा कि एक जगह गेहूं पड़े हुए हैं। वो उसे लिया उसने और ले करके चल के भागा कि जल्दी से बच्चों को खिला दो। वो वहां से चला तो रास्ते में एक आदमी मिला, ए भाई रुक जा। वो एकदम समझ रहा है कि ये शायद चावल वाला है। तो कहा, भाई मैं तो पड़े हुए लिए हैं, मैंने चोरी नहीं की। भाई मेरी बात सुन। वो घर आया, क्या है? देख, ये चावल मेरे हैं,
یہ چاول میرے ہیں, میں نے اس چاول کو چونکہ مجھے اگانا تھا, بونا جانتے ہو, بونا تھا, اس لیے میں نے اس میں دوائی ملائی ہے, زہریلی دوائی ہے. وہ بوتے بوتے اتنے چاول بچ گئے تھے, تو میں نے اپنے نوکر سے کہا تھا کہ اس کو دور جا کر کے پھینک آئیو, مگر اس نادان نے یا راستے میں پھینک دیا. یہ مجھے تجھے اتنا ہی بتانا ہے کہ یہ چاول زہریلے ہیں. میرے دوستوں, میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا وہ باپ 3 دن کے بھوکے بچوں کو کیا یہ چاول کھلائے گا؟ کبھی نہیں کھلائے گا, کبھی نہیں. اس لیے کہ وہ جانتا ہے یہ چاول بچوں کے پیٹ میں جاتے ہی زہر ہے, بچے مریں گے. اس کو جتنا یقین ہے اس سے زیادہ محنت کرنے کے نتیجے میں حرام مال سے بچنا. آخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے منہ میں ایک کھجور ڈال دی. اللہ کے نبی کو یہ شک ہوا کہ شاید یہ صدقہ کی ہو, کبھی یہ صدقہ کی نہ ہو. آپ نے ان کے منہ میں ڈال کر, انگلی ڈال کر اس کھجور کو نکال کر کے باہر پھینکا ہے. صدیق اکبر اپنے غلام کا ایک کھانا لے کر آیا ہوا, 3 دن کا فاقہ ہے, اس نے دیا, لقمہ کھایا. لقمہ کھانے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ حلال کا لقمہ نہیں ہے. صدیق اکبر اس کو انگلیاں ڈال کر کہہ کر کے نکال رہے ہیں, پھر کہا جا رہا ہے, پانی پی پی کر نکال رہے ہیں. اب آپ انداز لگاؤ, 3 دن کا اس میدے میں کوئی چیز گئی نہ ہو, ایک لقمہ گیا ہو, اس ایک لقمے کو نکالنے میں کتنی مشکل, لیکن برابر پانی پیتے رہے, انگلیاں ڈال کر کے نکالتے رہے, یہاں تک کہ بڑی مشکل سے وہ لقمہ نکلا. لوگوں نے کہا حضرت آپ تو اپنی جان نکال دیتے. فرمایا اگر یہ میری جان کے ساتھ نکلتا تو بھی میں یہ حرام لقمے کو نکالتا, میری جان کے ساتھ نکلتا تو بھی میں حرام نکلتا. معاملات, ہمارا ہر کام, ہمارے گھر میں جو مال آ رہا ہے, جو روزی آ رہی ہے, اگر میرے دوستو حلال کی ہے, بچوں میں اطاعت لے کر آئے گی, بچوں میں فرمان برداری لے کر آئے گی, عورتوں میں حیا لے کر آئے گی, عورتوں میں شرم لے کر کے آئے گی, عورتوں میں دینداری لے کر کے آئے گی. اور اگر آنے والا مال حلال کا نہیں ہے, میری بات پورا مجمع سن لو میرے دوستو, جہاں حرام کا مال پیٹ میں جاتا ہے, تقوی کو اٹھا کر باہر پھینکتا ہے, توکل کو اٹھا کر باہر پھینکتا ہے, حیا اور شرم کو اٹھا کر باہر پھینکتا ہے, جذبات ان کے ناپاک ہو جاتے ہیں. حضرت معروف کرخی کا مقولہ ہے, حضرت معروف کرخی کا مقولہ ہے, اگر حلال مال تو کھائے گا, تیری نیت نہیں ہوگی تو بھی تیرے اعضاء اور جوارے تجھے نیک کام کرنے پر مجبور کر دیں گے. اور اگر تیرے پیٹ میں حرام کا لقمہ گیا ہے, تو نہیں چاہے گا تیرے اعضاء اور جوارے تجھے حرام کاموں پر اور حرام چیزوں پر کھڑا کر دیں گے. معاملات ہماری بنیادی چیز ہے, محنت کر کے ان معاملات کو زندگی میں لانا. معروف کرتی beliau katakan hadir maka Allah dengan iman yang kita dapatkan saat kita keluar jalan Allah, ibadah pun mulai kita kerjakan, itu semua aset kita, dikasihkan pahala-pahala yang besar, laba seperti dalam perdagangan. Tetapi hadir itu keuntungan, pahala-pahala ibadah semua. Kalau ibadah kita tidak benar, maka itu akan hilang dari tangan kita saja. Capek orang kerja berdagang, untung banyak, tahu-taunya hilang begitu saja. Apa hasil daripada kerja dia? Hadir maka Allah, muamalah yang tidak benar sehingga nanti akan menghabiskan pahala-pahala daripada ibadah-ibadah dia tersebut. Maka hendaklah kita betul-betul hati-hati hidup setelah kita memanaskan iman kita sehingga semangat untuk beribadah. Jangan cukup sampai di sana, panaskan lagi supaya muamalah kita pun betul. Maksudnya bagaimana? Kita tanyakan, belajar ilmu-ilmu. Saya sekarang berdagang, tanyakan muamalah dalam dagang yang benar bagaimana, syariahnya apa hukum-hukum agama yang berhubungan dengan perdagangan saya. Jangan sampai ada riba yang saya makan, jangan sampai ada culas dalam perdagangan. Begitu pula hadirin Allah, dia punya pertanian, apa hukum agama yang berhubungan dengan pertanian. Semua kita pelajari, belajar dan belajar sehingga apa yang saya kerjakan dalam muamalah saya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak dijaga akan habis. Beliau katakan bagaimana perhatian Nabi kita Muhammad SAW kepada muamalah yang benar. Cucu yang dicinta, penghulu pemuda surga nanti. Tapi ada korma di mulut dia. Dan Nabi SAW ragu.
Apa ini korma-korma zakat yang tidak halal buat keluarga Rasulullah SAW? Maka dikeluarkan dari mulut cucu yang dicinta, cucu yang disayang, sedang makan korma. Nabi masukkan jadi beliau, dikeluarkan itu korma. Kenapa? Nabi katakan kepada cucundanya, barangkali ini adalah korma zakat yang diserahkan, tidak halal bagi kita. Nabi takut untuk memasukkan atau ada benda haram yang masuk ke perut cucunya tersebut. Nah, beliau katakan, hadirin Allah, makanan yang haramnya adalah racun. Begitu enaknya makanan tapi ada sedikit racun, maka akan membuat bahaya. Bahkan hadirin, satu orang miskin, dia sudah lapar 3 hari, anaknya melangkah pun susah, dia carikan makanan. Ternyata dia berjalan di sebuah persawahan, ada nasi di sawah sana, maka dia ambil. Cepat-cepat dia berlari untuk kembali untuk memberikan makan kepada anaknya yang kelaparan. Di pertengahan jalan ada orang lihat, saudara-saudara, sini dulu. Dia katakan, saya tidak mencuri, saya dapat di sini. Bukan, saya bukan menuduh kamu sebagai pencuri. Ini nasi atau beras tadi, milik saya. Dan dia katakan itu memang saya kasih racun di beras tadi atau nasi tadi. Untuk apa dikasih racun? Untuk memberikan makan kepada mungkin binatang-binatang, tikus dan sebagainya. Dan sisanya ini masih ada. Saya suruh kepada pembantu saya untuk dibuang jauh-jauh, tapi dia malas, dia lemparkan ternyata di sawah di tempat ini. Kalau kamu makankan kepada anak kamu akan mati. Maka orang seperti ini hadir, walaupun anaknya sudah kelaparan 3 hari, tapi tahu ini racun, maka dia tidak akan mau memberikan makanan kepada anaknya tadi. Ya. Begitulah hadir, makanan yang haram yang masuk ke tubuh manusia itu racun. Beliau katakan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, begitu ketahuan beliau dalam keadaan lapar 3 hari, datang hamba sahaya dia, membawakan makanan. Begitu laparnya beliau makan langsung. Tapi setelah dijelaskan oleh hamba sahayanya, wahai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kamu nggak bertanya kepada saya dari mana sumber makanan tadi? Karena begitu laparnya beliau nggak sempat bertanya, langsung makan. Dari mana kau dapatkan? Saya ini tadi buat seperti dukun, menebak sesuatu. Dan ternyata benar, zaman jahiliyah. Dia akhirnya ketemu dengan mereka, dikasihkan ini uang hasil daripada kerjaan sebagai seorang dukun. Maka Abu Bakar As-Siddiq paham itu adalah haram. Langsung beliau usahakan keluarkan. Bahkan beliau katakan minum air sebanyak-banyaknya, sehingga itu pun lukma atau makanan yang sesuap tadi bisa dikeluarkan. Beliau katakan, hadirin Allah, kalau orang sedang kenyang, nanti mengeluarkan satu suap lagi itu mudah. Ini orang lapar 3 hari, maka itu makanan begitu cepatnya dicerna oleh perutnya tersebut, mengeluarkannya begitu susah. Bahkan orang bertanya, wahai Abu Bakar, kasihani diri kamu, masa untuk satu suap itu aja kamu harus memaksa diri kamu? Dia katakan, walaupun ruh saya keluar untuk bersama dengan keluarnya makan, saya rela. Ketakutan nanti benda yang haram. Lalu ada kan satu orang ulama, Syekh Ma'ruf Karhi rahmatullah alaih, dia katakan, hadirin Allah, sebelumnya tadi beliau katakan bahwasanya kenapa sekarang anak-anak kita jauh dari agama, begitu pula putri-putri kita nggak mau berpakaian, menutup orang, perbuatan sembarangan. Itu semua adalah pengaruh daripada makanan yang haram yang kita ambil, kerjaan yang haram diberikan kepada anak dan istri, maka itu semua akan mempengaruhi ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ulama dari Ma'ruf Karhi rahmatullah alaih, dia katakan setiap orang yang makan makanan yang halal, maka hadirin, sadar atau tidak, itu makanan yang halal tidak akan mendorong dia untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap makanan yang haram masuk ke mulut seseorang, sadar atau tidak, itu makanan yang haram akan membawa dia kepada perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi untuk kita hadirin Allah, inilah kerjaan kita Pak dalam tabligh. Bukan selesai 4 bulan saya sudah sholat puasa saja, tidak. Harus kita lagi dan lagi kuatkan lagi iman kita sehingga membantu untuk membetulkan daripada muamalah dalam kehidupan. मेरे दोस्त और भाइयों, ये मामलात को यानी शरीयत पर लाना, इसके लिए उलमा इकराम से पूछना, उलमा से पूछ करके अपने घर का एक आने वाला पैसा मेरे घर में हलाल का है, ये कब होगा? जब मेहनत करके ईमान को उस डिग्री पर लाएंगे कि जिससे इबादत की लाइन का दीन आसान हुआ, अब और मेहनत करेंगे, मामलात की लाइन का दीन आसान होगा। और चुनाचे जैसे सहाबा किराम का ईमान बना,
जैसे सहाबा किराम का ईमान बना कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर एक आयत नाजिल हुई और सूद के मना का हुक्म आ गया, तो अल्लाह के रसूल ने जब ऐलान फरमाया कि मैं सबसे पहले मेरे चचा की सूद की रकम को माफ़ करता हूँ और लोग अपने अपनी सूद के रकम को माफ़ कर दें, सहाबा ने इस पर अमल किया। इतना ही नहीं, हज़रत अब्बास को जब पता चला, हज़रत अब्बास आए और आकर के हज़रत अब्बास ने ऐलान किया कि मेरे भतीजे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सूद वाली रकम को सूदी रकम को माफ़ कर दिया है, मैं पूरे सरमाए को माफ़ करता हूँ और सबको माफ़ कर रहा हूँ। 100% सहाबा की ज़िंदगी में मामलात सही हुए। एक तिजारत, एक मौका, एक जगह जरा भी शक हो, उनकी ज़िंदगी में ये नहीं होता था हराम का माल ना आए। यहाँ तक के एक सहाबी ने ज़मीन बेची, दूसरे सहाबी ने खरीदी। खरीदने वाले सहाबी ने जब अंदर अपना काम शुरू किया, अंदर से खजाना निकला। अब देखिए, खरीदने वाले सहाबी बेचने वाले सहाबी के पास जाकर कहते हैं, भाई मैंने ज़मीन खरीदी है, ये ख़जाना मैंने ख़रीदा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये तुम्हारा है, ले जाओ। बेचने वाले सहाबी कहते हैं, भाई मैंने तो ज़मीन और ज़मीन के अंदर में जो कुछ था वो सब बेचा था, मुझे कहाँ पता था इसमें ख़जाना है, मैंने सब कुछ बेचा था, ये मेरा नहीं, ये तुम्हारा। अब ये मसला दोनों, वो भी लेने के लिए तैयार नहीं, ये भी लेने के लिए, क्या वजह है? क्या वजह है? हर एक समझ रहा है गलत पैसा और गलत माल हमारे घर में ना आए, हराम का पैसा ना आए। यहाँ तक कि ये दोनों का काजी के पास मुकदमा गया। अब काजी के लिए भी बिल्कुल नया मुकदमा, वो कह रहा है मेरी नहीं, वो कह रहा है मैं नहीं लेना चाहता। अल्लाह ने जहन में बात डाली, एक से पूछा तुम्हारा लड़का है, कहे, दूसरे से पूछा तेरी लड़की है, कहे, उनका ये दोनों की शादी करा दो और ये माल इनको दे दो। सहाबा कदम कदम पर डरते थे, भूख बर्दाश्त होती थी। हमें इस दावत की मुबारक मेहनत, मेरे दोस्तों इसको समझे हम, अल्लाह मुझे भी समझा दे, आपको भी समझा दे, ये मेहनत खाली चक्कर का नाम नहीं, चिल्लों पर चिल्ले लगाना, 4 महीने पर 4 महीने लगाना, 5 अमाल का कोर्स कर देना, ये नहीं है। इस मेहनत से मतलूब जो है वो दीन जिंदगी में लाना है। जैसे खेती किसान मेहनत करता है खेत पर फसल को लेने के लिए, पानी देता है, खाद देता है, लेकिन कोई किसान 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना उसमें पानी और खाद ही देता रहे तो लोग उसको पागल कहेंगे। फसल के लिए खेती है, अब फसल ले, उनका फसल नहीं लेने, वो सब कहे पागल है। ऐसे मेरे दोस्तों, इस मेहनत से मुझे और आपको बार बार इसको करना है कि मेरी ज़िंदगी में पूरा दीन आ जाए। पूरे दीन का पहला बाब इबादत है। इबादत मेरे पास किस दर्जे में आई है, किस ताकत के साथ आई है। अब मुझे मेहनत करके मामलात की लाइन का दीन लाना है, मेरे घर में मामलात सही हो। रास्ता उनका वही कुर्बानी के साथ 4 महीने लगा। ईमान के हलकों में बैठ इनफरादी इज्तिमाई दावत दे, अल्लाह की बड़ाई को बोल, ईमान की डिग्री तेरी ऊपर होगी, मामलात का दीन अल्लाह आसान करेंगे। Beliau katakan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita datang kepada alim ulama, bertanya, apakah pekerjaan yang saya kerjakan ini sudah sesuai dengan perintah Allah, dengan cara Nabi SAW? Apakah uang yang saya dapatkan ini betul uang yang halal, atau ada syubhat atau haram dalam uang yang saya miliki? Jadi bukan hanya kerja mencari uang dikasihkan pada makan pada anak dan istri, tidak, tapi tanyakan pada alim ulama, muamalah saya sudah benar atau belum, dengan sistem dagang yang saya arungi demikian betul, sudah betul atau tidak, sesuai dengan syariat atau tidak. Had Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mengarahkan ke sana perlu derajat daripada panasnya iman tadi ditingkatkan sebagaimana air tersebut. Lagi dan lagi korban lagi. Tambahkan lagi pengorbanan sehingga iman kita semakin meningkat. Sehingga tidak ada amal-amal kita yang tidak sesuai dengan muamalah yang diajarkan oleh agama. Maka tidak ada berhenti dalam usaha agama itu. Para sahabat radhiyallahu anhu memahami betul perkara ini. Maka mereka berusaha untuk bertanya satu-satu daripada pekerjaan mereka kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apakah yang diharamkan, dihalalkan? Karena bila katakan tadi satu makanan yang haram saja, satu suap saja, itu akan mempengaruhi daripada ibadah dia, hilang nanti ibadah dia. Begitu pula iman dia lama-kelamaan akan melemah.
Beliau katakan bagaimana orang dahulu perhatian dia hadirin kepada muamalah. Allahu Akbar. Nabi SAW telah menceritakan dalam hadis yang sahih, satu orang dia beli tanah, kemudian ketika dibangun menggali pondasi, ternyata ada pundi-pundi di sana, berisi banyak perhiasan. Maka dia sadar, saya kan cuma beli tanah saja, berarti ini milik saudara saya yang menjual tanah tadi. Dia datang, wahai saudara, saya kan akadnya beli tanah saja daripada kamu. Ternyata ini ada pundi, berisi permen, ini milik kamu. Dan anehnya lagi yang menjual mengatakan tidak, saya sudah niatkan jual tanah dengan isinya, berarti ini milik kamu. Allah. Bagaimana kehati-hatian orang dahulu hadirin, karena dia takut kalau ini saya makan kepada anak dan istri saya, berarti benda yang haram, akan menjerumus, akan membawa mereka ke dalam api neraka. Dan ini juga takut, ini bukan milik saya, dan saya sudah jual tanah ini semua. Dia takut. Akhirnya dua-duanya pergi ke mahkamah, dan ternyata qadhinya juga, hakimnya juga orang yang bertakwa kepada Allah. Dia katakan, Allah berikan ilham kepada dia. Dia tanya, kamu punya anak? Ya punya putra. Kamu punya anak? Putri punya. Udah kawinkan dua-duanya dan dikasih hadiah buat mereka. Allah. Hadir Allah Subhanahu wa taala. Ini muamalah yang benar. Sehingga masing-masing merasa dia tidak berhak. Bukan mau mengambil, tidak. Allahu Akbar. Jadi iman kita tidak hanya bertahan kepada degree, kepada derajat yang sudah ada, tapi tingkatkan lagi sampai betul-betul setiap pekerjaan saya sesuai dengan syariah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. मेरे भाइयों, इस मेहनत के ज़रिए से आज अल्लाह का शुक्र है उम्मत में ये मिसालें बन रही है। ये नहीं कि इस मेहनत से एक तबका हर जगह तैयार हो रहा है कि अपने कारोबार और अपनी हर चीज़ को इस्लाम और शरीयत के मुताबिक करूं। इसके लिए हम देख रहे हैं अब इंग्लैंड से, अफ्रीका से, अमेरिका और कनाडा से ये मिसालें मेरे सामने हैं कि वहाँ से एक आदमी सफ़र करता है, कोई मकसद नहीं उसका, सीधा दिल्ली उतरता है और दिल्ली उतर करके गाड़ी लेकर दारुल देवबंद जाता है, अपनी पूरी तिजारत के मसाइल रखता है, उन मसाइल का जवाब लेता है, वहाँ से सीधा दिल्ली और दिल्ली से अपने मुल्क। इतना दूर आता है। ये कब आया मेरे दोस्तों? जब ईमान की मेहनत होगी, इबादत की लाइन का दीन जिंदा होगा, तो जैसे हम इबादत के मसाइल पूछते हैं उलमा से, साहब मेरा रुकू में ये हुआ मेरी नमाज हो गई, मेरा सजदे में ये हुआ मेरी नमाज हो गई, मैं इस तरीके से देर से आया मेरी नमाज हो गई, मेरे कपड़े का ये हाल है मेरी नमाज हो गई, जैसे हम इबादत की लाइन पूछते हैं, इससे ज़्यादा हम मामलात की लाइन का दीन है। जब इसकी अहमियत आएगी तो मेरे दोस्तों मामलात की एक एक चीज़ पर निगाह होगी। फिर आदमी मेहनत करेगा, अगली मेहनत, अब इतने पावर से मामलात की लाइन का दीन तो जिंदा होगा। माशरत जिस पर इस्लाम कायम होगा, इस्लाम कायम होता है माशरत पर। माशरत जो है कि आदमी का घर में रहना, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, पड़ोसियों के साथ, महल्ले वालों के साथ, आने जाने वालों के साथ एक मुआशरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में कायम की थी, और उसमें हर एक दूसरे के हक को अदा करने वाला था, हर एक दूसरे को नफ़ा पहुंचाने वाला था। इस वो मुआशरत हमारी ज़िंदगी में सही हो जाए, ये हम मेहनत करके हमें लाना है, और मेहनत का तरीका वही है जो अब तक मेहनत करते करते हम आगे बढ़ रहे हैं। Beliau katakan tadi hadirin, para sahabat radhiyallahu anhum dibina oleh Nabi SAW dalam imaniyat, ibadah, juga muamalat yang benar. Sehingga yang tadi mereka juga bermuamalah dengan riba juga. Tapi ketika iman meningkat dan meningkat, maka datang ayat tentang mengharamkan riba, dan Nabi ilankan bahwasanya aku telah injak riba itu di bawah kaki, sudah diharamkan di Allah, kecuali ribanya Abbas bin Abdul Muttalib. Hadirin Allah dimaafkan. Tapi ternyata pamannya Nabi SAW Abbas, begitu imannya kuat, datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, jangankan riba, keuntungannya, modal saya semua yang halal pun saya juga sedekahkan semuanya. Karena beliau takut ada bercampur riba daripada modal yang dahulu tersebut. Itu kekuatan dan imannya para sahabat radhiyallahu anhu. Nah, hadirnya melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ini kerja kita, bagaimana perlu muamalah kita perbaiki. Sebagaimana kita datang pada alim ulama menanyakan saya bagaimana cara saya mandi, bagaimana saya bersuci, berwudu, bagaimana cara sholat yang benar.
pakaian saya bagaimana. Saat kita tanyakan tentang ibadah kita, sama dalam hal muamalah kita lagi datang kepada alim ulama, bertanya, betul aku tidak muamalah saya ini, dagangan saya betul enggak, bagaimana saya menyawa dan sebagainya, tanyakan. Beliau katakan, alhamdulillah, saya lihat sendiri ketemu orang, dia tinggal di Inggris sana, di England sana. Setelah dia ikut dakwah dan dakwah, dia punya bisnis, datang dari England, Inggris, datang ke New Delhi. Kemudian langsung pergi kepada pesantren Deoban namanya, membawa catatan, menjumpai alim ulama, mufti-mufti di sana. Syekh, saya punya bisnis demikian, tolong kontrolkan halal atau tidak pekerjaan saya. Kemudian mendapatkan jawaban-jawaban dari ulama tadi, dia simpan, dia kembali ke New Delhi, kembali lagi ke Inggris sana, ke England sana. Pedagang muslim hadir untuk memperbaiki muamalah dia saja. Dia tidak merasa bangga dengan sudah 4 bulan, kemudian bangun masjid dan sebagainya, tapi muamalah tidak benar. Datang dia hadir dari England sana ke New Delhi, ke Deoban, ke pondok pesantren, menanyakan alim ulama. Begitulah yang kita inginkan hadir Allah Subhanahu wa taala. Satu persatu daripada muamalah kita ini kita ingin perbaiki. Kemudian terus hangatkan lagi iman kita tadi. Teruskan ini kerja dakwah sampai hadir muasyarah kita juga akan benar. Kerja apa yang perbaiki muasyarah kita, itulah kerja kita sekarang ini. Dengan kita lagi-lagi keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala, bicara kebesaran Allah, supaya nanti kekuatan iman kita semakin panas, sehingga mendukung kita untuk memperbaiki muasyarah. Pergaulan suami istri, dengan tetangga, dengan jiran, anak dan keluarga, ini adalah muasyarah. Bahkan beliau katakan, hadirin, kalau tadi muamalah untuk menjaga diri kita, jangan sampai ada benda yang haram, ibadah kita hilang. Dan ini muasyarah justru untuk mengembangkan Islam lagi. Tersebarnya Islam kemana-mana, tegaknya Islam adalah dengan muasyarah yang benar. Maka kalau muasyarah umat Islam ini hadir sudah benar, nanti kita akan lihat orang berbondong-bondong untuk masuk ini agama. یہ معاشرہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو سکھایا تھا، جس کے ذریعے سے ہر ایک دوسرے کا حق دینے والا نہیں بلکہ اپنے حق کو معاف کر دے کر کے مزید دینے والا، ایسا ماحول بن گیا تھا کہ مدینہ منورہ جو ہے وہ معاشرہ پھر دنیا میں چلا. آپ کو ایک بات عرض کر دوں، کتنا معاشرہ بنا ہوگا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کا مکان خریدا 80,000 میں، خرید لیا، بات ہو گئی، رقم دے دی، ان کی جو گھر کی رقم 80,000 تھی وہ دے دی، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں 2 دن میں اس کو خالی کر کے آپ کو حوالے کر دوں گا. ٹھیک ہے، ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر. رات کو عشاء کی نماز کے بعد خریدنے والے جو صحابی، اسی محلے میں ان کا مکان تھا، وہ آئے تو دیکھا کہ محلے کے کسی گھر سے عورتوں کے رونے کی آواز آ رہی. گھر میں گئے، گھر میں جا کر کے گھر والوں سے پوچھا کہ بھئی کیا ہے، خیریت ہے، محلے میں کیا ہوا، کہیں سے رونے کی آواز آ رہی. کہاں پر؟ ان کا وہاں پر. وہ اندر گئے، جا کر کے تحقیق کر کے آئے. کیا ہے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ گھر والوں سالہ سال سے اس گھر میں رہتے تھے، اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے گھر بیچ دیا ہے تو اس گھر کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، تو اس پر بچے رو رہے ہیں. وہ صحابی جو خریدنے والے تھے، دیکھو اسلامی معاشرہ کسے کہتے ہیں، دوسرے کی تکلیف میں کام آنا. خریدنے والے صحابی نے فوراً آدمی بھیجا، بیچنے والے صحابی کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ بھائی یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا وہ بچے ہیں، بہت سالوں سے یہاں رہتے تھے، محلہ دوست وغیرہ سب تھے، اس لیے رو رہے ہیں. آپ فکر نہ کریں، 2 دن میں مکان خالی کر دیں. فرمایا نہیں، یہ مکان اب تمہارا ہے، یہ مکان اب تمہارا ہے. وہ بیچنے والے صحابی گھر گئے، جا کر کے 80,000 لے کر آئے اور آ کر کے کہا کہ جب آپ نے مکان کا سودا میرا فسخ کر دیا ہے تو یہ آپ کے 80,000 لے لیجئے. فرمایا یہ 80,000 تو تمہارے مکان کے میں نے دے دیے تھے، یہ مکان میرا تھا، یہ مکان بھی میں نے تمہیں ہدیے میں دے دیا. نہ مجھے 80,000 چاہیے، نہ مجھے مکان چاہیے. یہ تھا وہ معاشرہ کہ مدینہ منورہ میں ایک بچہ یتیم ہوتا تھا، ایک بچے کا باپ مر جاتا تھا تو اس کا صحابہ میں سے جو ملتا اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھ رہا کہ بیٹا ہم تیرے ہیں. ایک بیمار ہوتا تھا، ایک بیمار، پورا مدینہ اس کی تیماردار ہوتا تھا. ایسا ماحول، ایسا معاشرہ قائم کیا گیا تھا کہ اس معاشرے میں ہر ایک حق والے کا حق دیا جا رہا تھا. ماں کا بیٹے پر کیا حق ہے وہ تو دنیا جانتی ہے، بیٹے کا ماں پر کیا حق ہے.
आज हम अपनी औलाद के हक नहीं दे रहे, है मालूम नहीं। अच्छा नाम रखना, औलाद को दीन सिखाना, औलाद की तरबियत करना, ये औलाद का हक है बाप पर। अगर नहीं दिया तो क़यामत के दिन गिरेबान से औलाद पकड़ेगी। माल कम दिया है ये नहीं है, वो तो इसकी मुकद्दर का, मरने के वक्त में जो विरसा उसके पास में आ जाए वो उसका हक है। लेकिन दीन सिखाना, अपनी औलाद को कुरान हुक्म कर रहा है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ये अम्र का सीगा है, ये हम पर, इस औलाद का हम पर हक है। बीवी शादी करके लाए, उस बीवी का हक है हम पर, उसको हम दीन सिखाएं। हमारी बहनों का हम पर हक है, क्या माल नहीं, माल तो मुकद्दर का मिल जाएगा, इनको दीन सिखाना, दीनी तरबियत करना, ये हमारा हक है। दीन जब आएगा माशरा कायम होगा, जब माशरा कायम होगा तो हर आदमी चैन से होगा, और दुनिया का जो इंसान भी इस माशरे को देखेगा वो इस ईमान में दाखिल होकर के इस माशरे का फर्द बन जाए। Maka Rasulullah SAW telah membentuk muasyarah yang benar, yang baik, yang benar di Madinah, dan diajarkan kepada para sahabat untuk bermuasyarah yang benar, sehingga suasana muasyarah Islamiyah yang benar di kota Madinah tersebar seluruh permukaan dunia ini. Jadi setiap orang yang datang ke kota Madinah melihat muasyarah yang benar, yang baik, pergaulan yang indah di kalangan para sahabat, mereka dalam waktu yang singkat masuk Islam. Bagaimana hadir muasyarahnya para sahabat satu sama lain? Bukan cuma mereka tuh istilahnya menunaikan kewajiban saja, bahkan mereka mau mengorbankan hak mereka, dia korbankan untuk orang lain. Mereka tidak menuntut hak, bahkan hak mereka pun bisa dikorbankan. Bukan sekedar memaafkan saja, bahkan berbuat baik kepada berbuat yang tidak baik kepada mereka. Beliau katakan satu orang sahabat, dia beli rumah, harganya 80.000 dirham. Setelah dibeli, bayar, maka kata pemilik rumah tadi, baik, nah, sudah selesai, tapi masih ada benda-benda di rumah saya, nanti insya Allah 2 hari akan datang, nah, kamu akan ambil rumah, saya akan kosongkan. Sudah selesai, masing-masing pulang. Kemudian malam hari, ini pembeli tadi dia berjalan di lorong-lorong kota Madinah, ternyata ada suara tangisan anak kecil, perempuan. Dia pikir dari mana tangisan, dia dekat, katanya itu rumah sebelah itu. Kenapa itu anak menangis? Itu anak menangis karena dia mendengar ayahnya akan pindah. Ini rumah sudah dijual, sedangkan itu anak kerasan tinggal di rumah tadi, dan mendengar ayahnya mau menjual rumah, dia menangis dan menangis karena akan pindah rumah. Kemudian hadir Allah Subhanahu wa taala. Dia panggil penjual tadi ke rumah dia, saudara, anak kamu menangis kenapa? Dia kan ya biasa anak kecil bermain-main dengan tetangga-tangga, dia pun menangis. Dia katakan, saudara, tidak. Ini uang apa? Dia katakan, saya tidak jadi apa, bahwasanya kamu tidak usah pindah rumah. Uang yang tadi sudah saya sudah beli ini rumah, saya hadiahkan lagi kepada kamu, saya berikan pada kamu. Kamu tetap tinggal, nggak usah pindah dari sini. Maka dia pun pulang ke rumah. Dia ambil uang tadi oleh yang penjual. Dia datang ke rumah itu, sahabat, wahai saudara, rumah tidak jadi, kamu sudah kembalikan, nggak jadi dibeli. Sekarang ini uang saya kembalikan kepada kamu. Karena rumah tidak dikembalikan kepada dia, maka uang pun dikembalikan. Dia katakan, saudara, tidak. Itu rumah kan sudah milik saya. Saya hadiahkan kepada kamu. Ini uang adalah uang kamu juga. Kalau mau dikembalikan, saya hadiahkan kepada kamu juga. Itu hadir hebatnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nggak berdiam, mau menghadiahkan lagi itu uang. Begitu pula hadir Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan dari cerita berikutnya, kalau ada di Madinah satu anak yatim perempuan, yatim satu orang, tapi semua para sahabat pada letakkan memegang kepala itu anak yatim. Wahai anakku, aku adalah ayahmu. Jadi satu anak yatim, seluruh orang Madinah memikirkan itu anak. Satu orang sakit, maka semua memikirkan bagaimana kesembuhan itu orang. Begitulah muasyarah yang ditegakkan oleh Nabi SAW di kota Madinah. Dari muasyarah ini orang melihat berbondong-bondong untuk masuk agama Islam. Nah, inilah hadirin kerja dakwah kita ini. Bagaimana hari demi hari kita ingin, bukan sampai kita 4 bulan sudah selesai, saya sudah cek rumah, tidak. Itu adalah sarana. Tujuannya adalah sebagaimana petani tadi beliau katakan, dia menyiram kebun dia, sirami kebun dia.
tumbuh, sirami terus. Orang bilang ini orang gila. Wahai saudara, kamu nyiram kebun kamu ini sekarang berbuah, kapan panen? Saya nggak berhajat kepada panen. Yang penting saya siram terus. Ini berarti petani yang gila. Sama dakwah keluar terus keliling mana-mana, ke negara jauh mana-mana, tapi ternyata Islam tidak disempurnakan. Itu seperti orang gila, pekebunnya jadi gila tadi. Mudah-mudahan jangan ada jadi orang gila, insyaallah, amin. मेरे दोस्तों और भाइयों, ये चारों चीज़ें जब ज़िंदगी में आ जाएगी, ईमानियात, इबादात, मामलात, माशरत, ये एक दरख्त तैयार हुआ, फिर उससे फल निकलेंगे, वो है अखलाक। ये अखलाक जब ईमान वाले की ज़िंदगी में आएंगे तो ये अखलाक कट्टर से कट्टर इंसानों के क़ुलूब को बदल देंगे और लोगों की ज़िंदगियों में ये दीन दाखिल होगा। दुनिया में तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को अल्लाह जल शानहू ने जहाँ दावत की मेहनत दी, वहाँ अखलाक आला पैमाने के दिए। अखलाक के रास्ते से दीन दुनिया में आया है। Jangan ada yang keluar, tahan kita, insyaallah. Kita hormati yang bayan, Pak. Tahan saja insyaallah. Sabar, jangan अखलाक जिंदगी में, इसलिए ये अखलाक आएंगे, ये पूरा दीन जिंदगी में आएगा। मेरे दोस्तों, ये मुतालबा है किसका? अल्लाह जल शान होगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा। इस पर अल्लाह का वादा जो मैंने अर्ज किया, वो कब्र की आग, वो कब्र के सांप, वो कब्र का पीसना, वो कब्र का धंसना, वो मैदान हशर की तकलीफें जो एक बड़ा बदन बना करके जहन्नम में डाला जाएगा, उन तमाम बड़े बड़े मसाइल से अल्लाह निजात देगा और इस दुनिया को अल्लाह खुशगवार बना देगा और दुनिया की ज़िंदगी खुशगवार होगी। इसके लिए इस दीन को ज़िंदगी में ला देने के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को यतीम नहीं छोड़ा। आप एक कीमिया देकर अपनी उम्मत को गए हैं। जिस दौर में भी, जिस ज़माने में भी, जैसे हालात में भी उम्मत दीन से दूर हो जाए, ये आमाल दावत है, ये मुबारक मेहनत है। इस मेहनत को लेकर के जो उठेगा, कैसा भी सख्त माहौल होगा, खुदा उसकी ज़िंदगी में दीन को दाखिल करेंगे और उसके ज़रिए से दुनिया में दीन को फैलाएंगे और खुदा अपने दीन को गलबा अता फरमाएंगे और दीन गालिब होना शुरू हो जाएगा। वो मुबारक मेहनत मेरे दोस्तों, ये अल्लाह के रास्ते की नक्ल हरकत है। इसे किया जाएगा, जिंदगी में दीन आएगा। दीन का मुतालबा, सुन लो मेरे दोस्तों, दीन का मुतालबा हर ईमान वाले से है। हर ईमान वाले से पूछा जाएगा तेरी जिंदगी में दीन कितना है, और ये अल्लाह के सामने क़यामत के दिन हर एक से पूछा जाएगा क्या हाल है तेरा और तूने अपनी जिंदगी को क्या बनाया है। ये दीन का जिंदगी में लाना, चाहे हम मौलवी साहब हो, चाहे कारी साहब हो, चाहे हाजी साहब हो, चाहे मिनिस्टर साहब हो, चाहे वकील साहब हो, चाहे डॉक्टर साहब हो, चाहे सॉलिसिटर साहब हो, चाहे मास्टर साहब हो, और चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो, इसकी जिंदगी में कामयाबी के लिए दीन का जिंदगी में लाना उम्मत के हर फर्द पर फर्ज है। और हर एक को दीन लाने के लिए मेहनत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई है। इस मेहनत में इसे चलना होगा, इस मेहनत में अपने को बिठाना होगा, तालीम के हलकों में जमना होगा, अल्लाह की राह में निकलना होगा, इनफरादी इज्तिमाई दावतें देनी होगी, ये दी जाएगी और अल्लाह से मांगा जाएगा। अल्लाह ने इस मेहनत में वो तासीर रखी है कि खुदा अफराद की जिंदगियों को बदलता है, कौमों की जिंदगियों को बदलता है, मुल्कों की जिंदगियों को बदलता है और पूरी मिल्लत के रुख को बदल देता है। ये मेहनत खाली बराए मेहनत नहीं है, इस मेहनत को किया इसलिए जाएगा ये 5 शोबे मेरी जिंदगी में आ जाए, इसके लिए मेरी जान मेरा माल लगेगा। एक मकसद के लिए मैं मेहनत करूंगा, हमारा मकसद है पूरा दीन हम में आ जाए और हम इस दीन की दावत आलम के बसने वाले इंसानों को देंगे, मेहनत करेंगे, उनके हमदर्द बनेंगे कि उनकी जिंदगी में ये दीन आ जाए। इसके लिए मेरे भाइयों पूरा मजमा इत्मीनान से बैठा रहो। हमारे जो साथी अल्लाह की राह में 4 महीने
महीने के इरादे कर चुके हैं। अल्लाह इनकी जान और माल में खूब बरकत नसीब फरमाए। इत्मीनान से बैठे। हमारे वो साथी जो चिल्ले का इरादा कर चुके हैं, हम उनसे भी कहते हैं, नया जो मजमा ना भी चिल्ले 4 महीने का तय किया है, हम उनसे भी दरख्वास्त करते हैं, सोचो, बराहे करम सोचो, पलटो, सोचो और अपनी जिंदगी के मुतालिक फैसला करो। 4 महीने में ईमान अगर बन जाता है और इतना बड़ा दीन जिंदगी में आता है, इससे सस्ता सौदा कोई नहीं है। हिम्मत के साथ खड़े होकर के 4 महीने के अज़ाइम करो कि इंशाअल्लाह नकद यहाँ से 4 महीने जाना है। जिनके नाम पहले आ गए वो खड़े न हो। चिल्ले वाला 4 महीने के लिए तैयार हो तो वो खड़ा हो जाए। पूरा मजमा ऐसे ही बैठा रहो, अल्लाह से मांगते रहो, अल्लाह से मुतवज्जह रहो, अल्लाह दिल में दाखिल कर दे, खड़े होकर लिखा दो, वरना कम से कम पूरे मजमे में इस बैठने का और सुकून का जरिया बन जाओ। Masya Allah. Ini terakhir Pak, silakan angkat kepalanya lagi. Yang ngantuk-ngantuk tidur silakan. Bangun. Jadi hadirin beliau katakan, bagaimana nih dalam kerja kita di muasyarah kita demi hari demi hari kita tunaikan. Karena muasyarahnya bagaimana hubungan kita suami istri, anak, menunaikan kewajiban-kewajiban kita. Bagaimana hak seorang ayah, hak seorang anak, hak istri, bagaimana di saat hari perkawinan, maka ada hak istri kita yang harus kita tunaikan. Kewajiban kita apa kepada dia tersebut? Kita terima dia, bukan hanya untuk memberikan makanan, tapi berdasarkan agama. Anak kita datang, hari ini kita tahunya menuntut hak. Ini anak saya durhaka, anak saya nggak taat kepada. Padahal ada kewajiban yang harus dinaikkan oleh orang tua kepada anaknya tersebut. Anak punya hak. Di antaranya Nabi SAW jelaskan bagaimana memilihkan ibu yang baik. Begitu pula mengajarkan Al-Quran kepada dia. Mengajarkan Al-Quran kepada itu anak, mengajarkan agama. Bukan sekedar memberikan makan dan minum, itu jelas. Tapi juga Allah katakan qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi anak kita punya hak yang harus kita tunaikan. Berikan nama yang baik kepada dia, ajarkan Al-Quran, berikan pendidikan yang benar. Begitulah istri kita, bukan hanya dikasih makan, tapi dikasih pendidikan agama. Semua jadi muasyarah ini mengajarkan kepada kita bagaimana menunaikan hak masing-masing orang tersebut. Dan hadirin hadirin maka Allah, ini semua kita bina iman kita buat, ibadah kita perbaiki, muamalah juga muasyarah sehingga terbentuk seperti pohon yang besar. Dan hasil daripada itu nanti dengan iman yang kuat, ibadah terus, muasyarah muamalah, nanti timbullah buah. Dan buah itu adalah akhlak. Jadi intisab puncaknya daripada semua pengorbanan tadi adalah menunjukkan akhlak yang benar. Nah kalau sudah akhlaknya orang beriman dari benar, baik, maka nanti kita orang melihat Islam itu indah, melihat Islam itu senang, sehingga mereka berbondong-bondong untuk masuk agama. Dan hari bukan itu saja, tadi permasalahan di kubur, masalah di akhirat, bagaimana sisa kubur, bagaimana pula nanti beratnya sisa di akhirat, orang dibesarkan badannya, giginya sekali gunung Uhud, bagaimana mukanya dan sebagainya, keperluan dia makan, minum, kepanasan, itu semua akan terselesaikan dengan kesempurnaan agama yang dia amalkan. Kalau muamalah ibadah dia, iman dia benar, ibadah pun benar, muamalah, muasyarah akhlak benar, maka hadirin dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kubur betul-betul menjadi taman surga. Di hari kiamat di bawah naungan arsy Allah, dan hari demi hari surga dia semakin ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin maka Allah, bagaimana supaya agama yang sempurna tadi kita dapatkan? Itulah usaha kita sekarang ini. Jadi agama menuntut daripada setiap umatnya itu untuk berkorban. Bagaimana bukan hanya sebagai agama, tapi untuk khulufis silmi kahafah, masuk Islam secara kahafah, secara sempurna. Dan itu tidak akan didapatkan tanpa usaha. Itulah usaha kita sekarang ini, Pak. Kita keluar 4 bulan lagi dan lagi, sebagai hari demi hari supaya agama yang sempurna saya dapatkan dalam kehidupan saya. Maka kita keluar 4 bulan jalan Allah. Berapapun uang yang kita gunakan, dalam 4 bulan itu terjadi perubahan sehingga iman kita meningkat, ibadah kita baik, nanti muasyarah muamalah akhlak jadi baik. Itu adalah benda yang kecil, murah sekali hadirin. Hanya waktu 4 bulan uang kita gunakan tapi untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat, maka itu murah sekali. Bahkan nyawa kita pun kita korbankan juga untuk mendapatkan agama sehingga kita selamat daripada api neraka. Ini adalah benda yang murah kita gunakan. Hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesusahan-kesusahan di akhirat tidak akan terselesaikan kecuali dengan agama yang kita amalkan. Kita memang bergerak tujuannya agama. Tambah lagi kita gerak tadi supaya agama sedikit mencapai kesempurnaan agama 5 tadi. Sehingga kita di dunia akan dimuliakan oleh Allah, membuka pintu hidayah buat orang lain, dan kita di akhirat dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau katakan di malam terakhir daripada pertemuan kita,
Kita ingin semua nih supaya terjun dalam usaha ini agama, sehingga agama dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita niatkan semua bagaimana saya buat usaha iman sehingga Islam secara kafah saya dapatkan. Bersedia teman-teman insyaallah. Bagi mereka yang sudah mendaftarkan 4 bulan, jangan bangun lagi, tetap duduk. Yang lain jangan berdiri sampai selesai majelis. Kita minta malam hari ini bagi mereka yang belum mencatatkan namanya 4 bulan ataupun sudah mencatatkan nama 40 hari tapi ingin 4 bulan, maka silakan berdiri sekarang. Silakan bangun Pak. Yang belum mencatat हिम्मत के साथ saja. उठो, अल्लाह जल्ल शानु जिंदगी बनाएंगे। Maka bangun dengan semangat, nanti Allah akan bentuk hidup kita ini. दीन आएगा मेरे दोस्तों, तो दीन जिंदगियों में बहारें लेकर आएगा। Jadi beliau katakan kalau sudah agama akan datang, maka nanti yang lain pun akan mengikuti, akan datang semua, keduniaan akan datang. और आखिरत बना देगा अल्लाह पाक। Dan di akhirat nanti akan dibentuk kehidupan kita oleh Allah dengan ada agama. इसलिए और अल्लाह की जात बड़ी है, अल्लाह ले जाएगा। हमारा काम है खड़े होकर के अपने आप को इरादा जाहिर करना, बाकी मसला अल्लाह आसान करता चला जाएगा। Allah Maha Besar, Maha Pemberi. Yang penting hamba tampakkan dirinya, ya Allah saya siap. Nanti Allah akan bawa dia kemana-mana. Silakan आए Pak थे bangun. इज्तिमा के लिए, आए थे चिल्ले के लिए, हिम्मत से उठो, हिम्मत से बिस्मिल्लाह करो। Datangnya niat cuma hanya hadir istimewa saja atau hanya 40 hari saja. Sekarang kita jadikan 4 bulan. Bangun कौन Pak, पहल saya yang करता है berawal. इस मजमे में? Silakan, Masya Allah. 4 bulan. Yang belum ngasih nama. Alhamdulillah. 1. Sebentar dulu. Diri dulu. Yang lain lagi Pak. Yang di depan. Baris depan, Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Tetap di tempat Allahu itu Pak. Akbar. Yang belum mencatat nama saja. Yang belum mencatat और nama. हिम्मत से उठो। Atau yang 40 hari jadi 4 bulan. Silakan. ये थोड़े पीछे करो, उनका आगे बुला लो। Mari ke depan Pak. Yang catat 4 bulan ke depan sini. Ke depan sini. आ जाओ, आगे आ जाओ, Mari ke दुआ depan ले लो sini. नकद। Tolong buka jalan. Buka jalan. Buka di Iya. tengah ini, Pak. Itu bukan di tengah, Bapak agak ke belakang sedikit. Ini yang di depan Pak. हिम्मत Tolong ke belakang मर्दा sedikit. मदद खुदा। Tolong kasih tempat. Ini yang agak ke belakang sedikit. Pak Imam, tolong minta kawan-kawan agak ke belakang sedikit. Silakan maju ke depan sini Pak. Yang 4 bulan siap maju ke depan. अल्लाह के लिए आगे बढ़ने वाले बनो। Jadi semata-mata karena Allah. Kita maju ke depan, Masya Allah. जो अल्लाह के वादे पर कदम उठाता है, अल्लाह उसका हाथ पकड़ लेते हैं। Buka jalan Pak. Jadi orang yang bangun janji, yakin dengan janji Allah, Allah akan tunaikan janjinya. Masya Allah. Tolong buka jalan Pak. Buka di tengah nih. Buka sedikit. Tolong ini mundur, adik mundur sedikit deh. आ जाओ, हिम्मत से आ जाओ। Silakan ke depan sini, ke depan. Jangan ada yang moto Pak. Jangan ada yang moto. Silakan ke depan Pak. Berdiri. Jangan duduk dulu, berdiri dulu. Ke depan lagi sini, Pak. Ke depan lagi. से कहो वहाँ वो एक मजलिस में बैठा है, इतनी दीन की मजलिस में भी ये फोटो का हराम काम कर रहा है। Jadi beliau katakan ini majelis agama Pak. Jangan ada yang memotong. Ini tidak baik. इस मजलिस में भी दीन की तौफीक न होगी, कहाँ जाएगा? Nah, beliau katakan kalau kita dalam majelis agama tidak diberikan taufik mengamalkan agama, bagaimana tempat yang lain lagi? Silakan. Yang 4 bulan. बैठो। Silakan. और आओ हिम्मत से। Baru 5 Pak. Yang lain lagi. Masya Allah. Silakan. Maju ke माशाअल्लाह। depan. कौन है जो अल्लाह से मामला करे? Alhamdulillah 6. Ke sini Pak ya. Silakan yang 4 bulan. Mari. इनसे कहो अभी कोई तश्कील नहीं करेगा, अभी खुद आप अपनी जात के मुतालिक सोचो कौन सी चीज हमें चाहिए। दीन चाहिए तो दीन की मेहनत पर हमें कदम उठाना होगा। Jadi beliau katakan ini masalah kita masing-masing, Pak. Apa yang kita inginkan nih? Agama, usaha agama ini semua untuk kita, bukan untuk orang lain. अपने आप को समझाओ। Ini hendaklah kita pahamkan, ini untuk saya sendiri, bukan untuk yang bayan, tidak. अल्लाह का वादा है, अल्लाह उस दीन की मदद करने वाले की खुदा मदद करेगा। Jadi janji Allah, in tansuru yansurkum. Kalau kamu bantu agama Allah, Allah pasti bantu kamu. रोजाना सुबह सूरज तुलू होता है तो एक फरिश्ता कहता है अल्लाहुम्मा आते मुमसिकन खलफा, अल्लाहुम्मा आते मुनफिकन खलफा। दूसरा कहता है अल्लाहुम्मा आते मुमसिकन तलफा, ऐ अल्लाह तेरी राह में जो लगावे उसको और दे। दूसरा कहता है जो रोके उसके माल को बर्बाद कर। Nabi sabdakan, setiap matahari terbit di pagi hari, maka bersama dengan terbitnya matahari 2 orang malaikat mendoa. Yang satu katakan Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Allah kepada orang yang suka berinfak kasih ganti dia. Yang kedua mendoa Allahumma ati mumsikan talafa, ya Allah kepada orang suka menyimpannya, nggak mau menyumbangkan, nggak mau berinfak, hancurkan hartanya.
कौन है खरीदार? पहले से हाँ। तैयार होने वाले तो बहुत थे, यहाँ आए हैं, बयान में आए हैं और कोई इरादा नहीं, नकद उठ रहे हैं। नकद उठने वाला नकद अल्लाह की मदद को देखता है। Siapa lagi Pak yang akan berinfak, maksudnya untuk berkorban untuk niat agama, cash untuk Allah Subhanahu. Yang tadinya niat hanya untuk datang istimewa saja, tapi langsung dia berangkat 4 bulan. Silakan bangun lagi Pak. Yang di depan lagi, masya Allah. Yang depan, yang di tengah. Masya Allah, alhamdulillah. Maju ke depan deh. Langkah-langkah Anda mendekatkan diri Anda kepada Allah. Semoga dapat istri yang soleha, anak hafiz Quran semua, cucunya juga insya Allah. Silakan Pak. हर जगह से हर शादी अपने को Maju depan lagi, maju depan deh. Terus. Masya Allah, alhamdulillah. Silakan maju Pak. इस तरफ से भी आओ, ये मजमा भी सोचो, फैसले करो जिंदगी के। Terus depan sini, masya Allah, alhamdulillah. Yang lain lagi Pak, terus Pak. Saling tanyakan satu sama lain Pak, masya Allah. Masya Allah. Yang lain lagi Pak, masya Allah. 4 bulan. अच्छा, इस पूरे मजमे से कहो, थोड़ा तर्जुमा करो। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने हमारा साथ दिया। Jadi beliau katakan alhamdulillah Pak. Semoga Allah memberikan ganjaran pahala pada Bapak karena Bapak masih bersama dengan kami. आप माशाल्लाह अब तक इत्मीनान से बैठे हैं। Sampai sekarang tuan-tuan masih tenang duduk dengan sabar. इसमें बहुत बड़ा मजमा हमारा वो है जो 4 महीने के लिए पहले नाम लिखा चुका है। Jadi alhamdulillah sudah banyak kawan-kawan yang memberikan namanya 4 bulan. अब एक काम है, एक 10-15 मिनट का, तो आप हजरात क्या हमारा साथ देंगे? Beliau katakan kami minta lagi tambahan Pak, 5 atau 10 menit. Bersedia untuk memberikan waktu pada kami 5 atau 10 menit? Insyaallah. अरे साथ दोगे? Siap untuk memberikan insyaallah. Insyaallah. नहीं, ये आगे वाले नहीं, वो पीछे वालों से पूछो। Yang di belakang bagaimana Pak? Siap bertahan lagi Pak insyaallah memberikan waktu? Masya Allah. अरे तुम लोग दोगे साथ, ये पीछे वाले? Yang di belakang sana gimana Pak? Masya Allah. इंशाअल्लाह। अब एक काम करो, देखो ईमान का मुज़ाकरा ईमान वाले को नफा देता है। Beliau katakan, Nabi telah sabdakan, wadakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi berikan peringatan atau muzakarah tentang iman, itu akan memberikan manfaat kepada orang beriman. ईमान की बात आदमी करता है तो उससे उसके ईमान में कुव्वत आती है। Jadi kalau kita banyak muzakarah iman, sehingga nanti iman pun akan datang dalam diri kita, akan memberikan kekuatan untuk beramal. बहुत से साथी हमारे आते हैं जो ईमान की बात को सुन करके इरादा भी होता है कि मैं अल्लाह की राह में चला जाऊं, लेकिन इतने बड़े मजमे में उसकी हिम्मत नहीं होती और वो अपने इरादा उसका सड़ जाता है। Banyak kawan-kawan ini yang datang di sini hanya untuk istimewa saja, tapi mendengarkan bayan, semangat, ingin bergerak, tapi kadang-kadang dia ada rasa malu untuk berdiri di depan orang banyak. इसलिए मेरे दोस्तों, 5-5 आदमियों के यहाँ से लेकर आखिर तक हल्के बनाओ, एक दूसरे को तैयार करो 4 माह नकद के लिए। वो तैयार हो जाए, उसको हमारे पास भेज दो। एक 10-15 मिनट के लिए ज़रा इस अमल को पूरा मजमा एक साथ कर लो, एक साथ सब ईमान बोलोगे, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो जाएगी। Maka kita minta Pak, dari depan sampai belakang, termasuk yang berdiri-diri juga Pak, buat 5 halaqah, semua kita bicara masalah kebesaran Allah, kebesaran iman, supaya iman kita semakin kuat, rahmat Allah pun akan Allah curahkan kepada kita. Sehingga muzakarah 5 tadi, nanti yang bersedia untuk 4 bulan kirimkan kemari. Sekarang dari depan sampai ke ujung sana, tolong buat halaqah 5 Pak.